available in Pakistan for different type of companies. So broadly, we can categorize these frameworks in four types: International Financial Reporting Standards (IFRS), IFRS for SMEs. These have been recently issued by IFAC. Revised Accounting and Financial Reporting Standards for small size entities (AFRS) issued by ICAP, and Accounting Standard for NPOs. And I think some time ago, like 5 to 4 years, there was another applicable financial reporting framework in the name of MSC standards issued by ICAP. But that has been now merged with the IFRS for SMEs. So now how the entity will choose this framework will depend upon number of factors. We will discuss those factors. But the important thing is that these are the minimum requirements for any entity. For instance, in case of a financial institution, let's take an example of a bank or an insurance company. They will prepare their financial statements on IFRS, but you may find differences between the financial statements of a bank or a company because of local regulations. Similarly, in case of a power company, there are certain relaxations given under the local law. So a power company's financial statements will be different from the financial statements of any manufacturer. Now, the classification, I would say, is rather simple in Pakistan because we have a specific guidance available under the Companies Act, and which is any public interest company. Public interest company is already defined in Companies Act. They will prepare their accounts on IFRS. There is no exception. A large size company, now we can divide large size entity in two groups. If a large size company is also a Section 42 non-listed company, so that company will prepare its financial statements on IFRS, but they will have to also follow the requirements of accounting standards for NPOs. But accounting standard for NPOs, in my understanding, they are not very commonly used, and I have not seen any large size company which is appearing in this Section 42 company, but this is only my experience. Now, medium sized entity, where we will be focusing our attention in this presentation. Again, we can divide this company into two groups. If a medium sized entity is a 42 company also, that will prepare its accounts on IFRS for SMEs and NPO standards, and any other MSC, they will prepare their accounts on IFRS only for IFRS for SMEs. A small size entity, AFRS for SSEs. Now, one important thing to understand is if the upward upgradation is allowed. For instance, if a company is a small size, they can opt any specific framework other than a small size. For instance, they can go to medium size or they can go to IFRS. But this is not applicable for listed entities and medium sized entities. Meaning, if there is a listed company cannot prepare its financial statements on any other framework other than IFRS. And one more important thing, that if a medium-sized entity has opted for IFRS, so there is no pick and choose. So now that entity will have to prepare its financial statements entirely on IFRS. So ये नहीं कर सकते कि कुछ requirements उसमें से लेके आप अपने पास ले लें, and you are not following any specific standard. So that is specifically not allowed. And now, how this classification is based and on what numbers? This is very important. First, we'll Now we will be discussing only the requirements for medium-sized entities because IFRS are only applicable for the medium-sized entities. So again, this is relatively simple. This is given under Companies Act, third schedule of the Companies Act. You can see that a listed company cannot be categorized under the MSC. And what are the other categories? Any non-listed company, there are three criteria: paid up capital, turnover, employees. So this is relatively simple, less than 200, up to 800 million or 750. So if any of the condition is met, so in that case, a company will be categorized under the medium size, or that company will have to go and prepare some other accounts on any other framework. A private company, again, very simple.
Foreign company and Section 42 company, there is only one requirement of turnover, meaning that a foreign company or a Section 42 company cannot prepare their accounts based on SSCs, because there is no such relaxation given. So they can only prepare their accounts based on IFRS for SMEs or full IFRS. Acha. How we will categorize these financial statements and how we will choose the reporting framework, that is the most important aspect of this probably this section. Now, actually the numbers we see, you have to just, because we will take a case study, इसमें आपने सिर्फ number of employees याद रखने हैं 750 for a MSc. 750, if the numbers will exceed 750, that company is not categorized as an MSc. This categorization will be based on the last year financial statements. For instance, if we are making the financials for June 2020, so we will not follow the numbers for 2020. We will follow the numbers for 2019, and there will be these numbers we will have to follow for at least 2 years. So if a company is coming under these thresholds for 2 years, then we will choose those criteria. Otherwise, what we will do? Let's take this practical example, because this I was saying. Entity A private limited company, was classified as MSc and prepared its financial statements for 30th June 2019 in accordance with IFRS for SMEs. There is a selected opinion of ICAP also, and this is the most common the observation I have identified with which SECP is questioning the companies and as well as the auditors, because what in my personal experience, classification accounts बनाने में problem नहीं होती, classification में problem होती है कि the management is not opting the proper classification. Now let's just see. Take a minute and just think, like now we have been provided with 4 different scenarios, and the applicable thing and we for 2019 we have established that company is an MSc. Can we have a mic here? एक अगर हो जाए सर ताकि questions आए तो. We will try to spend some time on this slide क्योंकि यही एक important चीज है इसमें. अच्छा, first one जो है वो that is quite simple. Any suggestions? The company, what framework we will follow? IFRS for SMEs. Yeah, this is quite simple. Because 30th June 2020, the company was MSc last year, so we will have to follow the requirements of last year. And now comes 30th June 2021, 825. The threshold was 750. Now, in this case, what should we do? Sorry, SMEs. Any other suggestions? Yes, we will still prepare the accounts on SMEs, because even for 2021, the company is exceeding the threshold. But for the last 2 years, you can see that the last year the company was a large size entity, but in 2019 the company was still a medium size entity. So 2 साल का continuous period होना चाहिए. In this case, IFRS for SMEs, 30th June 2022 and 2023. Yeah, actually this was a case with, I've seen a case where SCCP has issued a notice to a company. So वहाँ issue आया था. In this case, this is relatively also simple. We will prepare the funds now on IFRS. Why? Even again, for 30th June 2020, the number of the threshold is now below the full IFRS criteria, but we have to see the previous 2 financial statements. तो अगर आप 2020 देखते हैं, 2021 देखते हैं, तो उन दोनों केसेस में IFRS SMEs, सॉरी, आपका क्राइटेरिया जो है वो लार्ज साइज एंटिटी में जा रहा है, and due to that fact, we will prepare our financial statements on IFRS. Now 30th June 2023, in this case, now इसमें भी 700 है, इसमें भी full IFRS होने चाहिए.
क्योंकि अगेन दिस वाज द ट्रिकिएस्ट पार्ट कि 2 years 7 लास्ट ईयर भी हमारे पास वो हो रहा है, इस साल भी 700 जो एमएससी में आ सकता है, लेकिन ये हमें ये देखना है फॉर द लास्ट 2 consecutive years, so 2022 and 2021. So that means the company will be preparing the financial statement for IFRS, and for 2024, so it's the option of the company. Company can go for IFRS, company can go for IFRS for SMEs. तो इसमें जा सकते हैं. Again, from IFRS to IFRS from SMEs to IFRS, the company can opt anytime. but कोई वो नहीं है, कोई आप there is but the company cannot anytime. However, from IFRS to IFRS for SMEs, so that will be done according to the definition and according to the classification given under the Companies Act. Right? Okay, so there's one more. There's one more practical scenario. This is also I have identified from one of the SSCP case. Entity A is a private company and is an outsourcing business. That company is employing over 1,000 employees. The company has outsourced 400 employees to entity B. This is quite normal. जो outsourcing companies होती हैं, वो employees hire करती हैं और वो different companies को on contract basis दे देती हैं. This is quite normal. Okay. On record, entity B also employs 100 permanent staff. While preparing the financial statements, entity B discloses the number of staff as 500. Just take 30 seconds and like try. What we are dealing here, and assume you are the auditors of both entities. So now, how the company will prepare its financial statements? इसमें important चीज ये है कि entity B जो disclose कर रही है अपने accounts, because there is a specific requirement for the number of employees, वो disclose कर रही है 500. तो entity B को किस पे बनाने चाहिए accounts? And because the requirement was 750 for MSC, above then जो हो जाएगा वो आपका होगा large size, and below 250 will be the small size. And we can assume that these conditions were present for the last many years, 2-3 years. So company B को किस पे बनाने चाहिए? Sorry. SSCs पे? Anyone like अगर कोई शेयर करना चाहे अपने कमेंट, ये प्लीज 100 होंगे. ओके. एंड व्हाट अबाउट, अच्छा आपका 1 पे क्या होगा, सजेशन होगा? ए पे 1000 वो बिल्कुल सही है. आई थिंक permanent employees. अगर वो permanent employees है, 1000 है, कंपनी ए के हैं तो 1000 का एक्सपोजर होगा. बी के अंदर जो है वो 400 का 100 का. ओके. आई थिंक फॉर एंटिटी ए यू आर एब्सोल्युटली राइट. 1000 एम्प्लॉइज होंगे. अच्छा, एक क्लासिफिकेशन जो चेंज हो गई है ना, देयर इज नो बाइफर्केशन बिटवीन परमानेंट एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज. अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज भी हैं तो कंपनी को वो शो करने हैं अपने पास. पहले आपको याद होगा जो कंपनीज एक्ट का डिस्क्लोजर होता था उसमें परमानेंट को वो इंक्लूड नहीं करता था. तो ये मैंने काफी चेक किया. आई कुड नॉट फाइंड एनी बाइफर्केशन. सो इन द एब्सेंस ऑफ दैट मींस देयर इज नो बाइफर्केशन बिटवीन परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो ए तो क्लियर हो गया. ए पे 1000 एम्प्लॉइज हैं. So that means they are exceeding the threshold for MSC. They will prepare the financial statements on full IFRS. अच्छा, अब जो ये B है, B itself is saying that they are employing 500 employees. और इस तरह वो शो कर रहे होंगे कि 100 permanent and contract पे आपके 400 meaning 500. So that means they will prepare their financial statements on MSC. क्योंकि जो contract यहाँ अब अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा एक देयर इज अ आई वुड से कि ओवरलैप कि वो एम्प्लॉइज एंटिटी ए इज आल्सो शोइंग एंड दीस एम्प्लॉइज एंटिटी बी इज, बट दिस आई हैव सीन दिस पर्सनली दैट दिस इज हैपनिंग. और आप अगर किसी लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स देखें, इन लिस्टेड कंपनी दिस इज वेरी नॉर्मल दैट दे हैव एक्वायर्ड सम एम्प्लॉइज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. और अब तो स्पेशली दिस इज द केस इन मल्टीनेशनल कि जहां फुल टाइम एम्प्लॉइज की देयर इज अ बार. सो व्हाट दे डू, they go for an outsourcing company, they make a contract and they just
they employ those employees on a contract basis. तो आप ये अगर if you go and see the financial statements of a multinational company which is also listed, you will find this quite normal. So the important thing is, like, if a company is disclosing these employees in the financial statements as their own employees, so meaning they will have to prepare those financial statement on MSC. And even अगर वो नहीं भी disclose कर रहे, and if you have identified कि these are on the contract basis, तो आप you will have to question them कि on those basis they are not excluding these employees under that जो contract है. जो what my feeling is कि कुछ employees जैसे hourly basis पे आते हैं, वो आप शायद exclude कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होगा. What my understanding is. लेकिन this is little gray area in this financial statement. To be on our safe side, we will have to follow the financial statement on MSC. Any question on the classification? And because then we will be focusing on the requirements for IFRS for SMEs. Any question? Yeah, please. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंपनी ने आउटसोर्स किए हुए हैं एम्प्लॉइज को, तो जिसने लीव ये सर्विसेज वो अपने पास पेरोल पे तो शो नहीं कर रहा, तो वो तो फीस दे रहा होगा उसको जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, तो वो अपने पास एम्प्लॉइज को कैसे शो करेगा? ओके, सही. देखिए, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये पहले एक रिक्वायरमेंट थी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को एक्सक्लूड किया जाता था. अब क्या रिक्वायरमेंट है उसमें? There is no specific requirement जहां आप contract employees को exclude करेंगे. So in the absence of that, meaning if you are employing any staff on a contract basis also, वो आपको अपने पास लेने होंगे. But again, this I just told this is a gray area. तो on a safe, इसमें ये भी हो सकता, मैंने कुछ ये देखा है कि कंपनीज के पास लीगल ओपिनियन भी होता है कि these are not our employees. So in that case, probably फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर भी नहीं आना चाहिए उनका. और एक रनिंग जी सॉरी, please you can sit. It's okay, thank you. The reason जिसकी वजह से मैंने 100 employees का कहा आपसे, वो ये था कि वो रिलेशनशिप जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी उन 400 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज में जो आपने जिक्र किया था. लेकिन आई थिंक यू सेड इट राइट कि ये ग्रे एरिया है, इसके मुतालिक कोई अथॉरिटी आप कोट नहीं कर सके कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज जो हैं वो साथ ही आएंगे. आपने कहा कि ये होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, है ना? लेकिन मेरा ये ख्याल है, जहां तक मैंने जो देखा है, कंपनीज जान करके अपना पेरोल लो रखने के लिए ज्यादातर एम्प्लॉइज जो है वो आउटसोर्स करवाती हैं और वो इस तरीके से पेरोल सर्विसेज और ये आउटसोर्स करके अपने पेरोल को कम रखने की कोशिश, अपने जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज परमानेंट जो हैं उनको कम रखने की कोशिश करती है. मेरा एक्सपीरियंस है. नहीं, बिल्कुल आपका ये, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो इसमें जब द ओनली कैच इज कि अगर कोई रेगुलेटर आपसे आके पूछता है कि दीज, जैसे इसी केस में ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज थे तो कंपनी ने क्यों डिस्क्लोज नहीं किया, तो हमारे पास उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है. सो इन दैट केस ये आई थिंक टू बी ऑन अ सेफ साइड, कॉन्ट्रैक्ट को एम्प्लॉइज को डिस्क्लोज होना चाहिए. और अगर सिर्फ इसी की, देखिए ये इशू कब आएगा, अगर सिर्फ इसी वजह से ये कंपनी की क्लासिफिकेशन चेंज हो रही है ना, आई वुड एग्री. लेकिन देयर आर टू अदर कैटेगरीज आल्सो, रेवेन्यू और टर्नओवर. सो और मैंने क्योंकि थोड़ी सी रिसर्च जो की थी ना, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉइज जो लिए हुए थे वो दे वर ह्यूज कंपनीज, दे वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन IFRS. बट देखें इसको अगेन, इसको थोड़ा सा केयरफुली हमें देखना चाहिए. और यस प्लीज. नहीं वो सॉरी. अच्छा, अगर ये हम अगर डिस्क्लोज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का भी, तो ये आउटसोर्स कंपनी जो है जिसके पास 1000 एम्प्लॉइज हैं वो भी डिस्क्लोज करेगा, और दूसरी तरफ जो है जो कॉन्ट्रैक्चुअल ले रहा है सर्विसेज वो भी डिस्क्लोज करेगा, तो दोनों तरफ वो एम्प्लॉइज जो है वो शो हो रहे होंगे. जी यही मैंने कहा ना, ये ओवरलैपिंग. देखिए ऊपर पे तो कोई इशू ही नहीं है, जो ऊपर जो 1000 एम्प्लॉइज में तो उसमें कोई इशू, जैसे इन्होंने भी कहा कि वहां तो एम्प्लॉय उनके, देयर इज नो डिबेट, वो दे विल हैव टू डिस्क्लोज दोस एम्प्लॉइज. अच्छा, एक और चीज इसमें यह है कि बिकॉज द कंपनी इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स आर नॉट प्रिपेयरिंग, तो वी कैन नॉट स्टॉप देम. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे भी रहे हैं, हम शायद वहां ज्यादा प्रॉब्लम हो इफ दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग दोस एम्प्लॉइज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो दिस इज जस्ट बिकॉज देखिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस के
देयर इज नो यस और नो आंसर। तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। तो the objective was कि we should be aware of this situation, ये practically है, हो रहा है इसको। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो आपने हमें कंडीशंस बताई थी क्लासिफिकेशन के हवाले से, क्या इन तीनों का साइमल्टेनियसली फुलफिल होना जरूरी है या कोई एक कंडीशन भी मीट हो जाए तो हम एमएससी में क्लासिफाई कर सकते हैं? ये नहीं, आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। एक ही है, लेकिन अगर आप वहां देखेंगे ना कंपनीज एक्ट में, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वहां कहीं लिखा हुआ है एंड, और कहीं लिखा है और कहीं लिखा है कोई भी नहीं। लेकिन दिस आई हैव चेक्ड विद आईकैप, और अगर आप इसको लॉजिकली भी देखें ना, लॉजिकली भी देखें तो कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि यू वुड रिकॉल जब IAS 17 था ना, IAS 17 में लीज की क्लासिफिकेशन होती थी, उसमें स्पेसिफिकली एंड गिवन था। दैट मींस कि वो वी विल हैव टू कंप्लाई विद ऑल 5 कंडीशंस। यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कंपनीज एक्ट के अंदर जो है ना, और एंड में कंफ्यूजन है। लेकिन आई एम वेरी क्लियर दैट एनी, अगर एक भी कंडीशन मीट हो रही है तो वो होना चाहिए। ये जूम पे क्वेश्चन आ रहा है शायद, कैसे नहीं? सर आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसे आपने कहा कि 400 एम्प्लॉइज थे, 500 एम्प्लॉइज थे, उन्होंने 300 के नाम है या 400 उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे हुए थे। आपने कहा 2-3 साल हो चुके, व्हाट इफ क्या नाम है ड्यूरिंग द ईयर वो चेंज हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो एट द एंड हम क्या नाम है एंडिंग जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है एट द ईयर एंड वो लेंगे या एवरेज लेंगे? ये मुझे इसके बारे में जरा बता दें कि क्या ये होगा। ओके, देखिए ये फिर हमारी पहली डिस्कशन पे जाएं कि लास्ट 2 इयर्स देखना है आपने। ये करंट ईयर की इंफॉर्मेशन तो देखनी नहीं है क्लासिफिकेशन के लिए आपने। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 30 जून 2022, उस पे तो इग्नोर कर देंगे आप अकाउंट, उन नंबर्स को। आपने नंबर्स देखने हैं 21 और 20 के, वहां देखने हैं आपने। तो वो, और वो सिर्फ इस कंडीशन पे नहीं है, वो दैट इज एप्लीकेबल फॉर टर्नओवर आल्सो, दैट इज एप्लीकेबल फॉर दैट कौन सा थर्ड, रेवेन्यू, टर्नओवर एंड पेड अप कैपिटल। वो तीनों पे देखेंगे आप। करंट ईयर पे देखना ही नहीं है आपने। यानी जब आप 2024 पे जब जाएंगे तब आपके लिए रेलेवेंट होगा 2022। जिसमें जूम पे भी कुछ क्वेश्चन आए, वो मैं एक में चेक कर लूं। तो IAS 20, आई थिंक दीज आर रिलेटेड टू, आई थिंक दीज आर रिलेटेड टू जो है पुराने रिलेटेड पार्टीज के। ये इसमें लास्ट इसको शायद पुरानी प्रेजेंटेशन के लग रहा है। रिलेटेड पार्टी का अब जब आएगा तो मेरे पास ऊपर बना है। अभी अभी आएगा, अभी आएगा बस। ठीक है, वो बस ठीक। ओके, थैंक यू। सो नाउ जी, ये लाइक आपका एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट का आई गेस 2021 में अप्लाई हुआ है ना, तो उसके बाद से जब करेंगे अप्रैल 22 में है। अच्छा, ये मेरे इसमें नहीं, लेकिन जब अप्रैल, उसमें कोई डेट है नहीं, तो फिर मीनिंग क्या, इमीडिएटली अप्लाई होगा? नहीं, इमीडिएटली मींस कि आपकी इस दफा की क्लासिफिकेशन तो लास्ट ईयर के बेसिस पे रहेगी ना। इस दफा जो क्लासिफिकेशन वो लास्ट, अब उसको मैं उसकी वर्डिंग जरा देखनी पड़ेगी। अगर उसकी वर्डिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आपने, हम अज्यूम करते हैं उसने इमीडिएट बोला है, अज्यूम ये कर लें, तो उसमें ये होगा, आप कह रहे हैं 800 की टर्नओवर हो गया है, तो अब हम 2022 के जो अकाउंट बनाएंगे उसमें आपका क्वेश्चन ये है कि हम लास्ट ईयर जो देखेंगे वो टर्नओवर 800 देखेंगे या 750 देखेंगे? तो आई थिंक 800 देखना चाहिए। नहीं, आप 800 ही देखेंगे, 800 करेंगे डेफिनेट। अगर उसमें स्पेसिफिक रिलैक्सेशन नहीं है तो आप 800 ही देखेंगे। नहीं, वो कुछ और। देखिए 2 साल का तो आपको बैलेंसेस देखने एज पर जो गिवन, आप जो रिक्वायरमेंट्स गिवन है। लेकिन एसएससीपी ने अभी दे दी है ना। आज एसएससीपी, एक कंपनी कभी भी, ये देखें, ये लोग करेगी, कंपनी भी और ऑडिटर भी कभी अपनी क्लासिफिकेशन चेंज फ्यूचर के रिजल्ट्स के बेसिस पे नहीं करते। अब लास्ट ईयर कंपनी बनी वो, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो लास्ट ईयर एमएससी थी ना। अब आपने करंट ईयर में देखना है। तो अब करंट ईयर में जब उसने अगर 800 कर दिया है, तो आप उस 800 का थ्रेशोल्ड लास्ट ईयर अप्लाई करेंगे। 1 बिलियन नहीं कर सकते, 800 ही करेंगे। लेकिन अगर उसमें स्पेसिफिकली कुछ लिखा होगा, तो ये मेरे ख्याल में ये देख नहीं सका मैं, लेकिन आई एम मोर देन 90% श्योर कि वो आपको 800 ही लेंगे। अदरवाइज फिर वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कोई, उसमें स्पेसिफिकली लिखा होता। फिर लास्ट ईयर तो क्लासिफिकेशन हो गई, देखिए वो क्लासिफिकेशन तो हो गई,
लेकिन अब ये नंबर ही चेंज, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐसा करें कि 800 एम्प्लॉइज को भी चेंज कर दे, वो जो रिक्वायरमेंट है वो देखना है आपने, नंबर्स लास्ट ईयर के देखने, लेकिन नंबर्स कितने होने चाहिए वो तो लॉ में गिवन है ना। नंबर चेंज तो एससीसीपी कभी भी कर सकता है, लेकिन एससीसीपी ये चेंज नहीं कर सकता अभी कि आज वो ये कह दे कि लास्ट ईयर कंपनी एसएससी थी या एमएससी थी और लास्ट ईयर को आप चेंज कर दें, ऐसा नहीं हो सकेगा। नंबर चेंज हो सकते हैं, और इससे तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, लॉस, यानी कंपनी जो है ज्यादा कंपनीज लार्ज साइज में चली जा रही है, ऐसा ही होगा ना इस साल। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि टर्नओवर 800 मिलियन थी, ठीक है, और उससे पहले कितनी थी, उससे पहले कितनी थी, इतनी थी ना। तो जब 2022 बनाएगा तो उसको अब उसको ऑप्शन नहीं है, उसको आईएफआरएस में जाना पड़ेगा जी। ओके, so thank you very much for your questions. Now we are moving to the specific requirements of IFRS for SMEs. This is a list I have come. Actually the difference between IFRS for SMEs and full IFRS. So वो तो हम discuss करेंगे. The concept is कि IFRS में आपको you will find some international financial reporting standards, some international accounting standards. लेकिन जो IFRS for SMEs है, that is divided under different sections, or naturally they are simpler. So you will find that these all section 2 to section 35, you will find that similar requirements, or there are some minor differences between IFRS for SMEs and full IFRS. So उनको हम discuss नहीं करेंगे. And there are certain standards like एक government grant का था, which is not I don't see कि बहुत ज़्यादा regularly use होता है. So we are not going to discuss that standard. So let's start with some of the general differences between IFRS for SMEs and full IFRS. The right side पे IFRS है या IFRS for SMEs है. We all know that when financial statements are restated, so under IFRS there is a requirement of 3 balance sheet, जिसको हम financial statement financial position कहते हैं. However, there is no such requirement in IFRS for SMEs. ऐसी कोई requirement नहीं है. Separate presentation of assets and liabilities held for sale. This is important. I will discuss this in detail. लेकिन ये IFRS 5 जो हमारा held for sale है, there is no specific requirement under IFRS for SMEs. Segment reporting and disclosure of EPS is required. No such disclosure. और ये naturally अगर इसको देखें, because under IFRS also these disclosures are only applicable for a listed entity, or any listed entity cannot prepare financial statements on IFRS for SMEs. अच्छा, एक चीज मैंने मिस कर दी थी कि जो the IFRS for SMEs which have been issued by IFAC, तो under the definition of IFAC, वो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनी, that can prepare its financial statements on IFRS for SMEs. So for instance, if you are under statutory law तो नहीं कर सकते, लेकिन if you are doing an audit of a company for group reporting, जो कि आप सिर्फ IFRS for SMEs पे कर रहे हैं, so in that case ये हो सकता है कि कोई भी थ्रेशोल्ड हो, तो उस केस में आप IFRS for SMEs ही फॉलो कर रहे हैं, ये हो सकता है. This is a possibility. So because the requirements for IFAC and requirements for Companies Act are different. Okay. Moving forward, so now here the IFRS for SMEs has specifically provided that what items can go to the comprehensive income. So and those items are foreign currency gains and losses on translation of foreign operation, actuarial gains and losses, fair value changes of hedging instrument, revaluation surplus for PPE. So the accounting of these are relatively, or not relatively, that is similar to IFRS, full IFRS. वो इनके वर्किंग में कोई नहीं, जो वर्किंग में चेंज है देन वो we will discuss. लेकिन for if we are preparing the financial statements, so you will only classify these items under OCI. However, under full IFRS, more items can be categorized, and I think one most common example is the unrealized gain on losses on investments through OCI. सबसे common होता है. So in वो हमारे पास IFRS for SMEs में नहीं है, because ये जो बने हुए हैं the simpler accounts, तो वो उसमें बहुत कम disclosures हैं, बहुत कम जो accounting requirements हैं. So that's why एक इसमें और भी चीजें हैं होंगी, लेकिन वो we are not going to discuss that.
But the important thing is कि IFRS for SMEs में more items will be classified under OCI. However, if under IFRS for SMEs में जो है वो सिर्फ ये 4 items है. This is very important, and this is also I didn't know this. जब I was preparing this presentation, so I identified कि under IFRS, in any case, you will prepare separate statements for OCI, P&L, and statement of changes in equity. Statement of change in equity, especially. However, there is a relaxation in this IFRS for SMEs that a combined statement of changes in equity and comprehensive income is allowed if the changes in equity is arising only from P&L, profit or loss, dividend payments, correction of errors, changes in accounting policies. Meaning, if a company is preparing its financial statement और वहां कोई भी comprehensive income का element नहीं है, कोई भी हो सकता है, that is possible. तो in that case, एक company सिर्फ एक ये आपको याद आएगा जो बहुत पहले एक स्टेटमेंट को हम लोग नीचे unappropriated profit और unappropriated profit brought forward और unappropriated profit carry forward ला देते हैं. So that is allowed. लेकिन मैंने I have not seen personally this in any company के जहां ये नहीं भी हो और that company is preparing its only one statement. I have not seen this, but this is allowed. And again, these are the minimum requirements. A company can prepare anything over and above those requirements. But if a company is preparing its financial statement or IFRS, तो वो ये relaxation नहीं ले सकती. अच्छा, अब just take this example. What I was saying. Entity A is preparing its financials for 2022. During the year, the company decided to dispose of one of its building and expects the transaction would be completed by 30th June 2023. अब इसमें हमें देखना है कि what will be the difference if a company is preparing its IFRS accounts on full IFRS or IFRS for SMEs. और कोई difference होगा भी नहीं होगा. IFRS for full IFRS is relatively simple, बहुत simple है. This is IFRS 5. तो कंपनी उसको हेल्ड फॉर सेल में दिखाएगी. एज अ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल आएगा, उसको अपने पीपी से निकाल देगी और उसकी जो भी अकाउंटिंग है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे जाएगा. अग्रीड? ये क्लियर हो गया. अच्छा, अब इफ अ कंपनी इज प्रिपेयरिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ IFRS SMEs, आई जस्ट मेंशन्ड कि वहां कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां है ही नहीं IFRS 5. उसमें क्या है, उसमें ये गिवन है कि अगर इस तरह की कोई चीज है तो दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर पीपी. यानी देयर इज नो सच क्लासिफिकेशन फॉर हेल्ड फॉर सेल. all these types of fixed assets will be classified under property, plant and equipment. The only catch is कि क्योंकि ये this is a possible indication of an impairment. ट्रिगर हो सकता है कि एक कंपनी अपना एसेट नेक्स्ट ईयर बेच रही है, क्योंकि हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस तो कैरिंग वैल्यू भी बुक करते हैं बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल. this may be there may be a case of possible impairment, तो वहां impairment टेस्टिंग ट्रिगर होगी. लेकिन there is no specific requirement for IFRS 5, तो आप पीपी में ही रखेंगे उसको और उसको नॉर्मल अपने जो आपके फिक्स एसेट्स हैं बाय व्हाटएवर नेम यू कॉल वहां लेके जाएंगे. एंड impairment टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस केस. Take another example. This is quite novel and I think ये थोड़ा सा हम लोग IFRS 5/6 में confuse करते हैं. Entity again is preparing its accounts. The company has decided to dispose of its long-term investments in equity shares and expects that the transaction will be completed by June 2023, meaning 1 year. और इसमें we are not discussing that whether those shares were classified under OCI or P&L. So in this case, is there will be any difference between the two frameworks, or how we will disclose these financial statements? इसको क्या करना चाहिए मैं? Any suggestions? Should we disclose this as held for sale or what? No, we are not. अभी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाली तो क्लास में डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं. वो तो कर ही रहे. हेल्ड फॉर तो इसको हम जैसे ऊपर वाला था हमारा, तो उसमें हम इसको क्या हेल्ड फॉर सेल में लेके जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि वही चीज है. एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग को 1 साल में कंपनी सेल आउट कर रही है और द कंपनी एक्सपेक्ट्स
that transaction would be complete by 22 and investments में भी यही होगा. The only catch is कि जो आप if you go and see IFRS 5, तो IFRS 5 ने specifically exempt कर दिए हैं जो IFRS 9 के instruments. So in that case वो कभी भी held for sale में classify नहीं हो सकते. लेकिन इस केस में एक मेजर चीज IS 1 के अंदर ट्रिगर होगी. Now the company will classify this as a current asset, right? The valuation method will be same, the classification will be same. के OCI में जाना है, penal में जाना है, वो we are not debating. The only important point is this will be a short-term investment. So this is quite normal in financial statement. So इसको आप जरा carefully देखें. Okay, moving forward. अच्छा, इसमें during ये वो same ऊपर का है. During the year, the company finalized an agreement to sell off its long-term investments in equity shares and expects to receive the sale consideration by 30th September 2022. इसमें भी there is no difference between full IFRS and IFRS for SME, same. Now, do you find any difference between second and third? Sorry. Yeah. Finalize. So what will? हाँ, तो हम क्या करना चाहिए फिर हमें? तो हम क्या यानी देखें, उसमें तो हम लोगों ने उसको करंट में कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स को करंट में कर दिया. तो इसमें क्या करेंगे हम फिर? यानी 30 जून के अकाउंट्स बनाएंगे तो कैसे शो करना चाहिए जी? सॉरी, ट्रांजिशन आप कैन यू माइक देंगे? सर इस गिवन सिनेरियो में ये क्लियर कर दें कि ये जो है ट्रांजैक्शन डेट पर चल रही है अकाउंटिंग या सेटलमेंट पे? नहीं, ट्रांजिशन डेट पे ना, क्योंकि जब लिखा नहीं है कोई चीज तो दैट इज इंप्लाइड कि ट्रांजिशन डेट पे ही है ना, क्योंकि द कंपनी हैज फाइनलाइज्ड एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग द ईयर और द ओनली थिंग इज द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव द सेल कंसीडरेशन. इसमें पहले हमें देखना है इज देयर एनी डिफरेंस, यानी इसको भी शॉर्ट टर्म में क्लासिफाई करें. ये तो डिस्पोजल हो, बिल्कुल गेन रिकॉर्ड हो जाएगा. गेन द ओनली थिंग कि हमारे पास अदर रिसीवेबल आ जाएगा, अमाउंट इन रिसीव्ड टू बी रिसीव्ड फॉर द कंसीडरेशन ऑफ सेल ऑफ शेयर्स. ये है द इंपॉर्टेंट थिंग इज के ये अभी तक अगर आप आई थिंक क्लाइंट्स बहुत सारे कहते हैं कि जब पैसा आएगा तो हम रिकग्नाइज करेंगे. हम दैट इज नॉट द केस नाउ, बिकॉज अंडर द न्यू IFRS वो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया है. वो मतलब खत्म तो खैर नहीं हुआ, अब वो जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म है जिस दिन आपने सेल कर दिया, दैट इज नथिंग टू डू विद कैश, अनलेस कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि अगर द कंपनीज विल जो आपका बायर है वो एक डेट तक आपके कंसिडरेशन नहीं देता तो वो वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट, उसमें तो हो सकता है. अदरवाइज ये आप इसको अपने पास सेल ऑफ करेंगे और अदर रिसीवर बुक कर लेंगे इसमें. सही, ओके. Now moving forward to some of the specific differences in the standards. Now left side is section 9 is relates to IFRS for SMEs और IFRS 10 हमारा full IFRS है. Consolidation में there is a difference in both of these frameworks. Like exemption from consolidated financial statements section 9 में है, तो if the parent is a subsidiary or subsidiary acquired for intention of disposal within 1 year. However, under IFRS 10 exemption is allowed if the parent is a subsidiary and consent for ultimate parent. वो हमें जरूरी लेना है, not traded in public market, meaning that is not a listed company. However, this is not applicable to Pakistan. कोई बता सकता है क्यों? ये कभी भी चेंज ये नहीं आएगा डिफरेंस. We can see a clear difference कि लेकिन ये पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होगा जी. Yes, excellent. Because there is a specific requirement in Companies Act कि आपको चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे आपकी अल्टीमेट बना रही है तो you will have to prepare financial statements. तो आपको बनाने पड़ेंगे. However, again, if you are doing a special audit or group reporting purposes, in that case you can follow these conditions. So पाकिस्तान में आपने कंसोलिडेशन करनी ही करनी है, लेकिन ये सिर्फ डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए. Okay, this is continuing with consolidated financial statements. Now, the difference is that the final foreign currency differences on disposal of foreign subsidiary as recognized in equity, same, but they are not recycled to P&L. ये कभी भी P&L में नहीं आएंगे.
लेकिन IAS 21 में these can be categorized, can be classified to, बल्कि however not can, I think they will be classified to P&L, classify हो जाएंगे। जो measurement criteria है वो almost same, like group investment in separate financial statements, cost less impairment option है, equity method है, fair value with finance, fair value gain recognized in P&L. This is the only difference. As per IFRS 9, अगर आप subsidiary को reclassify as a fair value कर रहे हैं, तो that gain will go to OCI. Very limited conditions हैं जहाँ P&L में जा सकता है, लेकिन we are not going to discuss. तो important thing is कि P&L IFRS for SMEs में if there is a subsidiary on fair value, that gain will go to P&L, or under full IFRS that gain will go to OCI. Okay, so this is a big difference between two standards, like IAS 28 and IFRS 11. They are very specific that if there is an investment in associate or a joint venture, they will be recognized under equity method. There is no other option available. However, in section 14 and 15 for SMEs IFRS, they can be classified as cost less impairment, equity, or fair value. Three options हैं. Now let's take another example. As of 30th June 2020, entity A holds 25% share capital of entity B amounting to rupees 10 million. Are we clear that what are the consolidated accounts, what are separate accounts? ये clear है मैं? तो पहले तो इसमें है कि entity A is preparing its financial statements और an entity A holds 25%. So entity A क्या कैसे इसको accounting करेगी? This is an associate और इसको उसके पास option under IFRS that company will be preparing on under equity method, कोई option नहीं है, लेकिन अगर IFRS for SMEs है तो there are three other options. अच्छा, whether this will be class, इसको हम क्या group in accounts को हम separate accounts कहेंगे या let's take this example first, फिर discuss, ये दोनों एक साथ ले लेते हैं. During the year 30th 2021, entity A acquired 60% equity of entity C. Same, वो A को भी hold कर रही है, A B को भी hold कर रही है, C को भी hold कर रही है. तो अब now what will be the case? In subsidiary हो जाएगी इसकी, और B पे क्या उस A जो है, now the difference will be कि A will prepare consolidated financial statements, लेकिन जो वो अपने पास वहां पर जो उसने पहले बी को इक्विटी काउंटिंग पे लिया हुआ था, लेकिन नाउ देयर इज एन ऑप्शन कि वो बी को भी कॉस्ट पे रख सकती है, और जब कंसोलिडेशन कर रही होगी दैट इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड अंडर द इक्विटी मेथड. ये है लाइक फॉर के इंपॉर्टेंट चीज है कि अ कंपनी हैज ओनली हैज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, उसमें क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं होती तो देयर इज नो ऑप्शन अंडर इक्विटी मेथड. लेकिन जब कंसोलिडेशन हो रही है किसी और वजह से, तो वो उस कंसोलिडेशन में दैट विल अफेक्ट द अकाउंटिंग ऑफ योर एसोसिएट आल्सो. अच्छा, थर्ड, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेमवर्क्स? अंडर आईएफआरएस पे हमें क्या कंसोलिडेशन इसमें करनी चाहिए और देयर इज एन एक्सेप्शन? आप इसको एक मिनट देखिए. अंडर IFRS और IFRS फॉर SMEs डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्योंकि एक हमने देखा था लास्ट टाइम कि इफ देयर अगर एक सब्सिडियरी एक्वायर होती है विद एन इंटेंशन टू सेल ऑफ विद इन 1 ईयर, सो इन दैट केस उसकी कंसोलिडेशन ही नहीं होगी फॉर अंडर IFRS फॉर SMEs. सो मीनिंग कि सी की कंसोलिडेशन इज नॉट मैंडेटरी, राइट? और IFRS में क्या होगा? फुल IFRS में उसमें तो इन एनी केस कंसोलिडेशन करनी है हमें. लेकिन अगेन कि जो भी यहाँ से कोई आंसर भी आया था कि अंडर पाकिस्तान दिस इज नॉट रेलेवेंट, बिकॉज कंपनीज एक्ट में देयर इज नो एक्सेप्शन कि इफ यू आर एक्वायरिंग अ सब्सिडियरी एंड योर इंटेंशन इज दैट यू विल बी सेलिंग ऑफ विद इन 1 ईयर, तो यू विल हैव टू कंसोलिडेट इट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अच्छा, ये जो फर्स्ट है हमारा, उसमें आर यू वी विल कॉल दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे, क्या कहेंगे उनको? और अगर जैसे लाइक फर्स्ट केस में एक ही अकाउंट्स बन रहे हैं, उनको क्या कहेंगे हम? ओके, नो, ये नहीं है, सेपरेट नहीं है वो.
देखिए यही मैं इसलिए कह रहा था, ये देयर इज लाइक हमारी थोड़ी सी होती है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट आता वहां है जहां कंसोलिडेशन हो रही है। जब आपकी और जो जहां कंसोलिडेशन नहीं हो रही ना, उसको हम कहते हैं सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ कॉन्सेप्ट के, जैसे एंटिटी ए है ना, एंटिटी जो सेकंड कंडीशन लेंगे, जब कंसोलिडेशन हो रही होगी तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स एक बनाएगी कंपनी, जो कंपनी ए के अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स होंगे, दोज विल बी कॉल्ड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये एक चीज है जो कि मैंने नॉर्मली नोट किया है कि हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं। तो separate financial statement concept जो है, that will only kick in when the company is preparing its financial statement, consolidated financial statements. कोई भी आपका कभी भी कुछ क्वेश्चन हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। अच्छा ये देखिए, अब एक एंटिटी है who has 3 subsidiaries and 2 associates, और इसमें we are not just assume this company is preparing its statements on IFRS for SMEs. Subsidiary 1 is carried at fair value, cost, equity. So you think that do you find any mistake or any ambiguity in this accounting? क्योंकि हमने देखा था कि जो आपके पास क्या क्या अलाउड है सब्सिडरी के में, आप fair value is allowed, cost less impairment is allowed, and equity accounting is allowed. So do you think is there like you find any mistake in this? So देखिए associate 1 and associate 2 is simple, लेकिन इसमें subsidiary 1 में एक cost है, एक fair value, that is not allowed because the company ये तो relaxation है, the company can follow any accounting policy, but that accounting policy should be followed on a consistent basis on a class of asset. So this is, ये नहीं हो सकता कि if a company has 3 or 4 subsidiaries, तो एक सब्सिडरी को वो फेयर वैल्यू पे कर रही है, एक सब्सिडरी को वो कॉस्ट पे कर, दिस इज नॉट अलाउड। हाउएवर दिस इज अलाउड कि दैट कंपनी इज कैरिंग ए सब्सिडरी ऑन फेयर वैल्यू और कॉस्ट एंड इज एसोसिएट ऑन इक्विटी, दिस इज अलाउड। सो within the same class of asset that the company cannot choose between accounting policies. So this is important. Okay, so moving forward to section 10, which deals with accounting policies and errors. So this is quite similar to IS 8. However, there are some specific examples given, so we will be discussing. So just for our understanding, we all are aware that accounting policies are specific principles, basis, conventions, and practices applied by entity, meaning the overall framework of an entity, the governance structure. Or surprisingly, there is no definition of accounting estimate both in IS 8 or IFRS or SME. However, there is a definition of change in accounting estimate. So there examples given है वहाँ पर. So accounting estimates are like bad debts, residual values. So, but what is the change in accounting estimate? This is also quite simple. The adjustment of the carrying amount of an asset or liability as a result of its assessment. Because अगर आपने आज ये realize किया एक asset अब आपकी जो यूजफुल लाइफ है वो नहीं है जो आपने एक्सपेक्ट की हुई थी, दैट विल बी अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. एरर, omissions from and misstatements in entity financial statement for one or more prior periods. So error could be like mathematical accuracy हो सकती आपकी आ सकती है, misinterpretation of facts हो सकता है. For instance, the company was preparing its financial statement last year on IFRS and was classifying its investments. उसमें थी OCI में कुछ इन्वेस्टमेंट है किया हुआ है, लेकिन उसका गेन वो पीनल में लेके जा रही है. तो this is an error because this is a misinterpretation of fact. So these are the errors. अच्छा, अब the examples, the definition is very easy. This is the only standard where I feel कि जो examples होती हैं, जो scenarios आते हैं, they are probably more important than the actual context of the standard. And why I'm saying this कि अभी हम ये देखते हैं इसमें अब which of the following changes in accounting policies. पहले तो मैं आपको ये दे दूं, just take a minute and चार स्पेसिफिक केसेस हैं इसमें. we are talking only about accounting policies, अभी accounting estimate नहीं है. any volunteer
like so how many do you think that these are the changes in accounting policies? Anyone? And there is again there is no yes or no answer. Okay, the company has adopted an FRS for the first time. This is a change in accounting policy. Yes, this is a change. But this is clear. If you are not clear, then please ask. The company has adopted an IFRS which has only resulted in certain additional disclosures. This is also a change in accounting because disclosures are part of the governing structure of the financial statements. The application of a new accounting policy that did not occur previously or differ in substance from those previously occurring. इसमें any comments? यहाँ specifically standard में है कि this is not a change in accounting policy. The company is applying anything which was not applicable to the company in previous years. और वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ. But लेकिन we will have to keep this in mind कि there is a difference. So I will clear that. The application of a new accounting policy for transactions that were previously immaterial. This is related to the third one because जो material concept है वो तो throughout चलेगा. Standards are only applicable to material items. So if there is कोई भी ऐसा item था जो immaterial था last time, so that will not be classified as a change in accounting policy. Now ये देखिए इसको देखें. Which one of the following is a change in accounting policy or estimate? This is relatively simple. The first one is estimate. Okay. Second, change in useful life of fixed asset. Estimate, right? Third one is cost model to revaluation model. This is a policy change. The only difference is under IS 8. This policy will be treated under and will be accounted for under IS 16. इसमें reclassification, इसमें जो retrospective application is not required. क्योंकि उसने कहा है कि आप this is out of the scope of IS 8 and you will go and check this in IS 16. IS 16 में retrospective नहीं है इसके अंदर. FSB benefit on collaterals, ये is more related to like the NBFCs or banks. This is again a change in accounting estimate because ये एक company जो अपने receivables को value तो पहले भी कर रही थी. Aging was based on provision was based on, I assume that was based on the prudential regulations. वो तो policy हो रही है. But this is just again a change that the now company is taking the benefit of collaterals. So in that case, and again the change in percentage of FSB. So these are only the changes in estimates. The only change is change from cost model to revaluation model. Okay, entity has an investment property which is carried at cost. During the year, the management decided to class. अच्छा ये मैंने ये सारे real उससे मैंने वो लिए. Definitely, I will not disclose the name of the company, but these I have taken these from all practical financial statements. The management decided to classify the investment property as non-current asset held for sale. So now, this is what do you think? This is a change in accounting policy or what? Any sir, wrong answer, right answer? It's not a change in accounting policy because why? कि जो अभी हमने डिस्कस किया था कि एसेट हेल्ड फॉर सेल कभी है ही, इज द फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं कंपनी, बिकॉज ये साइलेंट है, तो मीनिंग कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जब हेल्ड फॉर सेल में जा रहा है तो दैट वी विल आइडेंटिफाई दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन इज अपीयरिंग. सो इन दैट केस दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये एक सिर्फ क्लासिफिकेशन चेंज होगी. नाउ द कंपनी विल प्रिपेयर इट्स अकाउंट्स बेस्ड ऑन IFRS 5. Okay, entity A carries investment in shares at fair value. The fair value is based on breakup value of shares. This is also allowed in in case of unlisted company. During the year, the company decided to change the valuation technique from breakup value to discounted cash flow. This is also allowed.
So this is simple. This is a change in accounting estimate. This is not a change in accounting policy, because the company is only changing the valuation methodology of those investments. Okay, entity A is preparing its financials on a cash basis. During the year, the management decided to change from cash basis to accrual basis of accounting. Change in accounting policy. Actually, this is an error. This is an error. See, because cash basis of accounting is not allowed under IFRS or under anything. So meaning that company was, मैंने जान इसलिए आपको ट्रिक करने के लिए रखा था यार ये. So this is a, but ये है कि cash basis में क्योंकि allowed ही नहीं, तो the reason for this discussion कि ये जरूरी नहीं है कंपनी लास्ट में फाइनेंशियल बना ली है तो उसको हर साल whatever they do सही हो जाएगा. तो we will have to be like इसको इस तरह हमें देखना है कि लास्ट ईयर के, because whenever we are doing the audit for the current year, so we are giving an opinion on last year's also. So ये this will be a change in account, this will be an error, or this should be treated in an error. लेकिन सिर्फ ये है कि the requirement will be same, because if there is change in accounting policy, so in that case also we will have to prepare and like 3 balance sheet under IFRS retrospective application होगी. तो इस तरह की जो भी चीजें आएंगी हमें ये देखना है जरा इसमें. और probably क्योंकि जब error करते हैं तो the difference between that auditor may include an emphasis of matter paragraph in their audit report in this case, लेकिन change in accounting policy में जरूरत नहीं होती. A legal case was decided against the company. The case was pending since 2015, like after 5 years. No provision was made in the previous financial statement. The case resulted in a loss of which is material to the company. इसमें क्या है कि like आपका केस करंट ईयर में हुआ है, और जो अब इसके दो हो सकते हैं आंसर, लेकिन the simple answer is कि we are assuming that this case, the company was contesting this case like in tax authorities or wherever. So the case is decided in this year. So this is not a change in accounting policy, anything. This may be, ये आपका एक current year का वो है event है, and we are assuming this कि company इसको contingency में last time दिखा रही थी, और ये इस साल का इवेंट है तो इस साल का प्रोविजन बुक हो जाएगा इसमें. अच्छा, the deferred tax liability entity worked out rupees 50 million. However, the same was not recorded in the financial statement. Entity A decided to account for the liability in the year 2020. Yeah, what is this? Error. Yes, this is also an error, because under IFRS, the company was required to make deferred tax asset or liability. But again, इसमें के आप ये नहीं देखेंगे कि current year financial statement is, if the company is correcting those, so we will have to be sure that last year financial statements are also giving a true and fair view. In very rare circumstances, it is unclear whether transition is a change in accounting policy or estimate. So in this case, the standard is flexible, और उसमें ये कहा है कि we can select, we can treat this as a change in accounting estimate, or meaning we will not have to restate the financial statements. So ये एक relaxation हमारे पास given है. How does an entity deal with a transaction which is not covered under? This is also very important कि ये होता है. So the best example is like government grant IS-20. इसमें पहले तो आंसर इसका ये है कि अगर हमारे पास if we are dealing with any event which is not covered under IFRS, very rare circumstances, so what we can do, we can go to the nearest standard जो भी close है. Like I was given example of IS-20 deals with government grant. However, अब आपको एक कंपनी को ग्रांट मिली है from a related party or any other third party, वो भी ग्रांट है. So the company can follow the requirement of IS-20 on that grant also. Yeah, this is important. This is also allowed under IS-8 कि आप you can follow the guidance of any other standard जो कि आपको कहीं नहीं मिले. However, this is not allowed कि there is an proper treatment given under any IFRS, and the company is opting to go for the treatment for some like some company thinks कि वो बहुत easy treatment है वहाँ की, वो allowed नहीं है. Financial instruments,
the scope is given here in section 11 and 12, IFRS 2, 7 and 9. Okay. Just I was referring before that these IFRS for SMEs, the requirements are relatively simple. They have categorized the financial instruments under basic and complex financial instruments. However, no such bifurcation is given under full IFRS. So उनके accounting treatments क्या है, what we will not be discussing, वो quite similar है. However, we will discuss their measurement and classification. That under IFRS, we all know that we can categorize those financials at amortized cost, fair value through P&L, or fair value through OCI. Under IFRS for SMEs, we can classify those at amortized cost or fair value if available without undue cost or effort. So this is a relaxation. अगर आपके पास नहीं available, तो that those financial assets will be classified on cost less impairment. So this is a big relaxation, I think, because under IFRS 9, even if you are dealing with unquoted shares या आपके debt instruments, you will have to identify the fair value. Impairment is also like impairment is relatively simple in IFRS for SMEs. Impairment is based on is applicable on only financial assets measured at cost or amortized cost, and it is based on incurred model. Incurred model is like you would recall जो 39 में था, ये 39 में उस पर चला जाएगा, लेकिन IFRS 9 में तो आप ECL मॉडल पे चले जाएंगे. आप वो incurred मॉडल तो obsolete हो गया. और किस किस पे अप्लाई होता है वो ये मैं आपको दूंगा. This probably I would say the one of the most important slides of this presentation, जिसमें अगर हम इसको थोड़ा फोकस कर लें तो ये हमें काफी क्लैरिटी देगी. इसको जरा I would request कि take 30-40 seconds, then we will discuss. This is as per IFRS 9. On the next slide, we will discuss as per IFRS for SMEs. So the categories given under IFRS 9 that assets can be measured at amortized cost, one. Second is through fair value. This is the difference between IFRS 9 and IAS 39. Now there is a recycling or assets with no recycling, meaning no recycling, meaning that those gains or losses cannot go to P&L at any time. Liabilities measured at amortized cost and assets liabilities measured at fair value through P&L. Now, how we will do that? First one is quite simple. If अगर कंपनी के पास कोई डेट है ऐसा जो amortized cost पे रखा हुआ है, और that could be यहाँ listed हो, unlisted हो, we are not talking about that. That interest will go to P&L. Everything will go to P&L. अगर इसमें dividend definitely होगा नहीं उसमें, unrealized gain losses उसमें नहीं आएंगे, वो तो amortized cost पे. Everything will go to P&L. तो important है, that is the classification. The दो है जो fair value through OCI और fair value through OCI with cycling और recycling. अच्छा, now ये option नहीं है कंपनी के पास. With recycling, the company cannot classify its equity instrument with recycling. Meaning, if there is an investment in equity instrument, वो by default वो with no recycling में आएगी, और उसमें the only thing the company can take to P&L is the dividends. सिर्फ dividend P&L में जा सकता है. Otherwise, foreign exchange gain loss उसके OCI में आएंगे, उस पे impairment होगी नहीं. Impairment की relaxation खत्म कर दी है. ये this is one of the major change. पहले नहीं था ये IAS 39 में, impairment करनी नहीं है. And OCI. Rather, और जब आप with recycling देखते हैं तो उसमें interest P&L में आ रहा है, और आपका जो उसमें सब कुछ P&L में आता है, only unrealized gains and losses वो OCI में आएंगे आपके. Liabilities measured at amortized cost, वो that is also simple. अगर debt है आपका, वो liability similar है assets वाले के, और assets liabilities measured fair value through P&L, इसमें you can classify debt, equity और derivatives, और ये सब का सब P&L में चला जाएगा. Any question on the slide? Okay. You just have to like इसको आपने ना remember the difference between the fair value through OCI with recycling or asset measured at fair value with no recycling.
जो आपका सेक्शन 11 एंड 12 दैट इज क्वाइट सिंपल. फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एंड amortized कॉस्ट टाइप इज ओनली डेट, मीनिंग if you have a debt, so you cannot classify that instrument on fair value. ये है ही नहीं इसके अंदर, इजी कर दिया उसने. इम्पेयरमेंट पीनल में जाएगा, रियलाइज गेन पीनल में जाएंगे. फेयर वैल्यू मेजर्ड एट फाइनेंशियल कॉस्ट, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पब्लिकली ट्रेडेड इक्विटी. एंड फेयर वैल्यू एट कॉस्टलेस इम्पेयरमेंट, अगर आपके पास अनकोटेड शेयर्स हैं वो आपके पीनल में चला जाएगा. तो बहुत ही सिंपल है एज कंपेयर टू द फुल IFRS. ये अपनी क्वेश्चन है, आप ये एक जस्ट टेक 5 minutes, आई एम जस्ट चेकिंग दिस क्वेश्चन. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि व्हाई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट इम्पेयर्ड. एक्चुअली वो आई विल आंसर दिस फर्स्ट. वी कैन, आई थिंक प्रॉब्ली जब हम ये देख लेंगे उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन. मेरी प्रेजेंटेशन चली रही है. ये एक ये वाले ये इसके बाद ले लेते हैं. आगे जाना बस बस में से ये entity has purchased following securities during listed shares 1 million, listed shares fair value through OCI, and debt instruments fair value through OCI 1 million. At the end of fair value of these securities were as follows. So we are not discussing कि fair value calculate किस तरह हुई है. So accounting कैसे करेंगे हम. Year 1 में हमें दिया हुआ है 1.1, 1.2, 1.2. Year 2 900, 800, 800. I think year 1 is simple. Year 1 में आपके पास इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे पास है वो दैट विल बी डेबिटेड, एंड अनरियलाइज्ड गेन जो पीनल की है दैट विल गो टू पीनल. जो इन्वेस्टमेंट जो OCI है दैट विल गो टू OCI, दैट इज आल्सो सिंपल. डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट अनरियलाइज्ड गेन्स दैट विल गो टू OCI, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल. ईयर 2 इज इंपॉर्टेंट. ईयर 2 में आप देखें, ईयर 2 में क्या हुआ है कि अच्छा नाउ 900, 800, 800. ये we will have to just remember the 800 for debt instruments. इसमें again for listed shares fair value through P&L is very simple. Say unrealized loss, P&L would be loss चला जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी. लिस्टेड शेयर्स चले जाएंगे. लिस्टेड शेयर्स में आपका इम्पेयरमेंट क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन भी आया है कि दैट impairment is a part of your fair value recognition. जब आपने P&L के अंदर किसी को अपने क्लासिफाई कर दिया है तो उसमें सारा का सारा इम्पेयरमेंट भी ऑटोमेटिक बुक हो गया. फॉर इंस्टेंस 1 मिलियन का था, आपने जब उसको फेयर वैल्यू किया दैट इज 700,000, तो जब 300 आपने P&L में लेके गए तो उसमें इम्पेयरमेंट का पार्ट भी आ गया और उसके अंदर फेयर वैल्यू गेन्स लॉसेस भी आ गया. तो दैट इज नो क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट इन इक्विटी शेयर्स थ्रू P&L. हाउएवर जो इम्पेयरमेंट जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन IFRS 9 कि इसको आप कैसे क्लासिफाई करेंगे. नाउ हियर वी विल हैव टू ब्रेक आवर लॉस इनटू 2 कैटेगरीज के इम्पेयरमेंट लॉस कितना है इसमें और अनरियलाइज्ड लॉस कितना है. तो इसमें अब ये देखिए, इसमें अब जो ECL जो आपको मॉडल कह रहा था, अब वो पुराना जो साइकिल था वो सब खत्म हो गया है. इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ECL की वर्किंग करनी होगी और ECL का तो मॉडल पूरा बनेगा आपका. उसमें आपको जितने भी वो जो एजिंग एनालिसिस करनी है, वो जो फैक्टर्स है आपने डाले. तो फॉर सिंपलिसिटी वी आर अज्यूमिंग कि आपने जब कैलकुलेट किया उसकी टोटल वैल्यू, इसकी कैरिंग वैल्यू थी 1.2 मिलियन, लेकिन अब फेयर वैल्यू आ गई है इसकी 800 मिलियन, मीनिंग के 4 लाख रुपए का लॉस हो गया हमें. अब उस 4 को ब्रेक कैसे करेंगे कि हमने जब कैलकुलेट किया तो वी हैव आइडेंटिफाइड दैट प्रोविजन फॉर ECL वर्कड आउट टू बी ₹300. तो ये, और अगेन हम ये नहीं देख रहे कि कैसे निकला है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल चार्ज दिस 300 टू P&L, ये P&L में जाएगा. और अच्छा, जब ये 300 जब हमने माइनस कर दिया 1.2 से, दैट वी विल कम टू 900,000. हाउएवर द फेयर वैल्यू इज 800,000. तो 100 को हमें दोबारा इसको एक्सचेंज लॉस से गेन देखना पड़ेगा. इन दिस केस दिस इज अ लॉस. तो 100,000 का एक लॉस भी आप बुक करेंगे. वो फिर इन्वेस्टमेंट्स आपकी 400 पे आ जाएगी, 400 का लॉस हो जाएगा. और प्रोविजन जो ECL का प्रोविजन है वो P&L में चला जाएगा. अनरियलाइज्ड लॉस 100 मिलियन का आपका इक्विटी में चला जाएगा. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
difference between IFRS 9 and IS 39 also, or आपका जो IFRS for SMEs? 10 minutes. So let's take a 10 minutes break. So अगर हम अभी 3:30 हो रहे हैं, अगर हम 3:45 तक आ जाए, तो then we will try to wrap up in the next 30 minutes.
Okay, so let's move forward. Okay, so now moving forward to the key differences between the IFRS and for IFRS SMEs. So IS, this is relatively simple. That IS 40 requires that your subsequent remeasurement, there is a choice that entity may choose between the cost or a fair value model. However, in case of SMEs, so they don't have the they don't have an option. Investment property will be classified and valued at fair value. However, if fair value is not determinable, so that will be treated as property, plant and equipment. So this is again a simple requirement है इसमें. Borrowing cost must be expensed in IFRS for SMEs. Borrowing cost can be capitalized in accordance with IS 23. Yeah, जी. नहीं तो अभी भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज अभी भी है ना, ये खत्म IS 23 में बोरिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज होती है ना अगर क्वालिफाइंग एसेट, ये तो अभी भी, ये तो पहले जो पहले आप बात कर रहे हैं 23 में उसमें एक्सपेंस आउट नहीं होता था, उसने फिर क्राइटेरिया लाया था कि वो पुरानी बात हो रही है लेकिन काफी कि आपने 23 में कैसे करेंगे. अभी इफ दिस इज अ क्वालिफाइंग एसेट आप कैपिटलाइज तो कर सकते हैं ना. आप फॉरेन करेंसी उसकी फॉरेन एक्सचेंज की बात तो नहीं कर रहे? हाँ नहीं नहीं अंडर IFRS है वो, अंडर IFRS एसएमईज करनी पड़ेगी, इसमें अभी भी है. अभी आपको अंडर फुल IFRS तो अभी भी अलाउड है. ओके, अंडर IS 16 the review of useful life and review of useful life should be performed annually. There is no specific relaxation. However, in section 17, review of useful life, residual value and useful life is performed only when there is an indication. Meaning ये इसको इसने impairment से link कर दिया है. तो there यहाँ पे relaxation है. Borrowing cost must be expensed here and borrowing cost can be capitalized in accordance with IS 23. Transfer of revaluation surplus to these are the concept which are not given under section 17. तो ये सिर्फ IS 16 में है. एक है transfer of revaluation surplus to retained earnings. So meaning this surplus cannot be transferred to P&L. However, this can be transferred to P&L in for IFRS for SMEs. लेकिन what my understanding is कि there is a specific bar on this in Companies Act. I'm not sure कि अब वो खत्म हुआ है कि नहीं, लेकिन ये पहले ये आप नहीं लेके आ सकते थे. तो अंडर ISG में चेक नहीं कर सका. So in that case for IFRS for SMEs में भी ये you will not be able to transfer your revaluation surplus to P&L. Non-current assets shall not be depreciated if classified as HFS. So because there is no specific classification under IFRS for SMEs for asset held for sale. So this is a major difference. So under IFRS, held for sale assets will not be classified, would not be depreciated. Rather, they will be carried at their fair value or cost to sell. This is quite also similar. Like intangible assets में जो under IS 38 choice between cost and revaluation model for subsequent measurement, the company can choose any model. कि cost पे भी रख सकती है, revaluation पे भी रख सकती है. However, section 18 subsequent measurement will only be made at cost. तो ये भी simple है. अच्छा, indefinite life, there is a concept of indefinite life in IS 38. For instance, if there is an intangible asset where the company has assessed its value, उसकी value assessed indefinite है, so the company can classify that asset. However, under for IFRS 10 में maximum life can be 10 years, meaning कि 10 years पे उसको amortize होना ही होना है. So similarly, so impairment testing is not required under IFRS for SMEs. However,
impairment testing is required under IS 38 if those intangible assets are for indefinite useful life. So this is simple. Development costs can be capitalized under IS 38. There are 3 or 4 conditions given. Development costs must be expensed in IS in section 18. So you can see there is a major difference between these two standards. So these are relatively simple. आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको नॉन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे जाना है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, तो आप ये बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं. IFRS 3, which is business combination, that requires any entity that if there is a transaction cost for acquiring any subsidiary, so those transaction costs are expensed out. However, transaction cost in IFRS for SMEs are part of cost of investment. Similar to intangible asset, goodwill for IFRS 3 is not amortized. However, there is a mandatory requirement for annual impairment testing. Mandatory requirement. So this normally we miss this. ये mandatory है. This is not voluntary. और ये वो भी नहीं है कि when there is an indication, तो आपको annual goodwill की testing करनी है. And for IFRS for SMEs, goodwill is amortized for 10 years if a reliable estimate cannot be made. For instance, अगर आपके पास कोई estimate है कि goodwill is the useful life of goodwill is 7 years, उसमें आप 10 years नहीं जा सकते. So that life would be 7 years. Lease का तो I think all together is different. Now IFRS 16 तो it deals with ROU assets and lease liabilities. So, but in section 20 of IFRS SMEs, this is quite similar to just the IS 17. वहाँ पर हमें सारे almost different है इसमें. और IS जो 20 है वो IS 17 था, वो तो बिल्कुल simple है. उसमें ROU assets भी recognize नहीं करने आपको. उसमें आपके पास there is an option of operating lease. However, there is no option of operating lease under IFRS 16. क्योंकि under IFRS 16 now all leases will have to be capitalized unless if the value is very immaterial or short term है. Short term is like 1 year के अंदर खत्म हो रही है आपकी. So otherwise you will have to recognize in ROU asset and the related lease liabilities. So definition of lease does not include hire purchase of contracts, but I'm not sure this is relevant क्योंकि hire purchase contracts अब after leasing होते नहीं है, बहुत ही rare है. But however, there is a difference कि IS 16 does not deal with hire purchase. वो सिर्फ leases को देखता है कि now you will have to classify those leases as ROU assets and financial liabilities. However, यहाँ आपके पास अभी भी operating lease का cushion है. अच्छा, moving forward, this is I think important slide कि ये है, this deals with the provision and contingencies. So and either I have also identified that SECP has issued a number of I would say queries to the audit firms and different companies why this has not been disclosed. So just discuss this quickly. Provision, what is the difference between a provision and a contingency? So in very simple, the simple definition is कि provision आपने recognize करना है, contingency should not be recognized. And what is the difference we are going to discuss? Let me just take this question. ये एक शेयर, हाँ, एक मुस्तफा है, उन्होंने क्वेश्चन वो शेयर, आई थिंक दिस प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड. लेट मी जस्ट चेक. मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर होंगे. अच्छा, तो ये मुस्तफा आपने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं ये आई थिंक प्रॉब्ली ये हो जाएंगी शेयर. मैं भी कंफर्म करूंगा आपको. और एक क्वेश्चन है अकाउंटिंग ग्रेजुएटी टर्म में. A company accounting, there's a question, a company accounting for gratuity at terminal basis, accrual basis being immaterial in 2018. After 2018, it becomes material. Whether actual valuation carried out. Okay, so this is Mohammed. उन्होंने question पूछा है कि a company, there is a gratuity scheme और last year actual valuation नहीं हो रही थी because that was immaterial in terms of the overall context of the material. So whether this will be treated as a change in accounting policy. So
यूसुफ, आई थिंक जो मेरी पहली स्लाइड्स थी, सो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच वाज इमटेरियल इन प्रायर ईयर्स और इमटेरियल इन करंट ईयर, दैट इज नॉट बी कंसीडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. अच्छा, प्लीज शेयर द स्लाइड्स. यस, मिस निदा ने कहा. अच्छा, ये now here let's check if there is a present obligation. I will also explain what is a present obligation in simple terms, that liability or that amount is determined or is confirmed that there is a possible, that is not a possible, that company will have to pay something. This is a present obligation. If it is a present obligation and probable outflow भी है हमारे पास, कि होना है हमारे पास से, realizable estimate can also be made. So in that case, this is a provision. The company will have to book this liability in the financials. Whereas if this is not a present obligation, however, this is a possible obligation. Possible obligation is uncertain. अब possible obligation में भी दो हैं. If possible obligation, अच्छा sorry, अगर वो possible obligation भी नहीं है, तो that means this, we are talking about the third box, we will not have to do anything. Now, if it is a possible obligation and this is this is a possible obligation and that possible obligation is remote. So in this case, कि ये भी आपका जो है केस में, अगर वो रिमोट है तो थर्ड कैटेगरी में चला जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. अगर पॉसिबल, देयर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन और वो रिमोट भी नहीं है. रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट और प्रोबेबल का जो आईएस में तो डिफाइंड नहीं है, बट दिस इफ more than 50% chances that of occurrence of any event. So meaning कि अगर आपके पास जो आपको, अगर let's take an example of a legal case, आपको लॉयर लिख के देता है कि मोस्ट लाइकलीहुड, उसमें मीनिंग होता है कि 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि दिस केस विल बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द कंपनी. सो ये दिस इज नॉट डिफाइंड अंडर द आईएस, लेकिन आई थिंक ये जो बेसिस ऑफ कंक्लूजन है वहां पर ये डिफाइन हुआ होगा. So we can again, if there is a possible obligation जो कि remote नहीं है, तो that will be classified as a contingency. This is a contingency. अच्छा, अब present obligation पे दोबारा है. If a present obligation probable outflow is अगर नहीं है तो वो remote में चला गया. ये जो है realizable estimate, अगर if there is a present obligation जो कि probable भी है, realizable भी है, लेकिन ये बहुत ही rare है कि realizable estimate cannot be made. तो उसमें आप प्रोविजन बुक नहीं करेंगे, उसमें कंटिजेंसी में चला जाएगा. तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक्चुअली ये हमें, वी डोंट हैव टू मेमोराइज दिस, इससे नहीं होगा. विल हैव टू, अगर हम थोड़ा सा अपना लॉजिक कर लें कि किस वक्त ट्रिगर होता है कि प्रोविजन आपने बुक करना है, किस वक्त प्रोविजन बुक नहीं करता, वो मैं आपको और एक्सप्लेन भी करता हूं, बट दिस इज गिवन अंडर रेज हैंड. During the year 2022, the company acquired a subsidiary company with 60%. Whether while preparing consolidated financial statements, comparative figures will be consolidated just for the, yes, I think Yusuf, very good question. So definitely जो comparative है आपकी वो भी इसके अंदर आएंगे, because आपने जब group acquire किया है, meaning ये assume होगा comparative financial statements आएंगी, even if it was not a group last year, but you will have to assume that this group was present and you will have to give comparative financial statements in the current year. Okay, so any question on this before we move to the examples? Yeah, please. अगर ये ना पता लग रहा हो, वो तो बहुत रेयर केस में होगा, क्योंकि ये तो जजमेंट कॉल है. हाँ, नहीं तो वो आपको मीनिंग, फॉर एग्जांपल उसी में तो है 50. रिमोट क्या होगा कि 50%, ये आपका जजमेंट कॉल है. दिस इज अ जजमेंट कॉल. नहीं वो, लेकिन वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन में तो है ही नहीं. वो तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. अगर आपके पास एक केस है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर देखते हैं.
वो एग्जांपल से आपको क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होगा। ये देखिए, ये हम पहले ले लेते हैं, आई थिंक आपका केस में आएगा। Entity A is preparing its financial statement for 30th June 2022 based on the following. The company is defending a lawsuit and based on the legal view expects a favorable outcome. सही है? तो अब आपका केस इसी में आएगा कि क्या है कि there is a lawsuit और company meaning company is not making any provision in this case, नहीं कर रही है, एक legal view है उसके पास tax का and the tax का favorable view है. So in this case what should the entity do? We will disclose this as a contingency, right? क्यों करेंगे contingency? इसमें provision के required नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये आपका भी next अच्छा second है, the company is defending a lawsuit and expects a favorable outcome. ये जो है ना, ये I think थोड़ा सा mix होगा. अब होता क्या है कि let's assume this is a tax matter. अब tax matter में the management is also not expert, the auditor is not expert. That's why we ask for the legal or tax advice. इस केस में पहले में डिफरेंस क्या है कि there is a legal view, इस केस में मैनेजमेंट is making its own assessment. So here in my view this does not fall under आपकी सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में, इसकी लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी क्योंकि एक कंपनी के अगेंस्ट एक लॉसूट हुआ है और विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन कंपनी इज नॉट मेकिंग एनी प्रोविजन. सो लेकिन ये डिबेटेबल होगा डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, डिपेंडिंग इसमें ये चीज होगी कि वेदर द कंपनी इज एम्प्लॉइंग इन हाउस लीगल एडवाइजर. अगर बहुत सारी कंपनीज में ये होता है कि इन हाउस लीगल एडवाइजर होता है, अगर आपने उनकी कॉम्पिटेंस चेक कर ली है एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड, अच्छा आई एम अज्यूमिंग वी ऑल आर फ्रॉम द ऑडिट प्रोफेशन, राइट? मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से कोई नहीं है, मैनेजमेंट की तरफ से, सही? तो अगर इन हाउस हमने असेस कर लिया है तो इन दैट केस so we can live with it, but in my professional view the company will have to make a provision in this case. अच्छा, the company is defending a tax demand. अच्छा, again मैंने ये सारे जो है real से examples select किए ताकि for better understanding. The company is defending a tax demand and based on a decision by tax authorities to a different entity expects a favorable outcome and no provision is. This is also very common. जो कि हुआ क्या कि एक कंपनी के एक केस है वो चल रहा है लेकिन वो डिसीजन अभी तक उसके फेवर में लेट से नहीं आया या कंपनी लिटिगेशन में नहीं गई है, लेकिन बेस्ड ऑन एक सिमिलर डिसीजन किसी और कंपनी के अगेंस्ट आया हुआ है. तो इस केस में कैन वी लाइक अलाउ द कंपनी डू दिस? इसमें भी अगर देखें तो दिस इज अ ग्रे एरिया कि देयर इज अ केस. अच्छा, एक चीज मैंने मिस कर दी थी कि आपके जो प्रोविजन और कंटिजेंसीज हैं, स्पेशली कंटिजेंसीज में आपको डिस्क्लोज करना क्या है, द नेचर ऑफ द केस, द अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड द लाइक्लीहुड ऑफ लॉस और गेन, ये तीनों चीजें कर रही है. तो इन दिस केस द कंपनी इज डिफेंडिंग द टैक्स डिमांड, मीनिंग वी विल डिस्क्लोज व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द अमाउंट. अब लाइक्लीहुड, अब कंपनी व्हाट विल नॉर्मली हम बैलेंस शीट अपने जो कंटिजेंसीज का नोट है उसमें क्या लिखते हैं कि बेस्ड ऑन अ लीगल एडवाइस the company expects a favorable outcome, accordingly no provision has been made. So now what the company will write here ke based on a decision of a tax authorities to a different entity. So in my view this is little vague. So lekin yahan we will need to probably like put some professional judgment. So we will have to see what level of management, what level of the competence of management, because there is no yes or no answer for any of the concepts. So we cannot apply everything to entity A और वही चीज हम entity B पे दे दें, ये possible नहीं है. अच्छा, the company has lost a suit in the high court and intends to file an appeal in the Supreme Court. In my view this is a clear case of provision कि अभी केस ही नहीं हुआ एक, और ये this is also very normal जो होता है, और आपको you will find a number of companies कि जहां केस इज डिसाइडेड अगेंस्ट द कंपनी और देयर इज अभी फाइल ही नहीं हुआ. सो इन दिस केस प्रॉब्ली मैं अगर इफ आई वर द ऑडिटर्स ऑफ दैट कंपनी आई वुड बी लाइक परस्यूइंग दैट कंपनी टू मेक प्रोविजन. इसमें होना चाहिए. तो और ये तो बिल्कुल बहुत रेलेवेंट हम लोगों के लिए आया होगा, आई थिंक ये सबके लिए आया होगा. इस दफा टैक्स चार्ज इज कैलकुलेटेड टू 29% एंड नो इफेक्ट ऑफ सुपर टैक्स इज इनकॉर्पोरेटेड. ये अभी रिसेंटली
for 2022 this is a मतलब big change कि current year में आया और current year में apply हो गया. Super tax is at the rate of 5%. मतलब और भी different है. So in this case, so there is no option for any company, especially for synth. Or I have seen companies कि वो they feel that this is not justified, or okay, this is not justified, but this is the law of the land. So you will have to make provision at the rate of 34%, और deferred tax भी आपको 34 में करना होगा. और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये तो I think this is a qualification. This is a qualification even if it is immaterial, because this is a quantitative amount. और quantitative amount में आपको आपने materiality का concept देखा होगा कि there are certain concepts के जहाँ which is some provisions are required under the law. So उसमें आपको you will have to ignore the materiality concept also. So in this case ये this is very important, और ये अभी आपके सारे accounts पे most probably applicable भी हो रहा होगा. So make sure that the provision for tax should be based on 34% rather than 29%. Yes, please. नहीं, that वो तो उसमें चला जाएगा ना फिर आपका लीगल व्यू में 1 में चला जाएगा. आप ये देखिए ना, सारे इंटरलिंक्ड है, ये सारे इंटरलिंक्ड है. तो फर्स्ट में चला जाएगा वो, फिर दैट इज अ कंटिजेंसी हो रहेगी. एनी अदर क्वेश्चन? लेट मी चेक. During the company acquired, one is contingency. Yeah, okay, I think he is right. Mustafa, you are right. He is giving an answer. Dismiss कर दो. आंसर लाइव कर दो. अच्छा, अब लेकिन अभी भी 3 आ रहा है. डन कर दो. Okay. Now let's take some other examples. A retail store has a policy of refunding purchases by dissatisfied customers, even though it is under no obligation to do so. It's a policy of making refunds is generally known. So this is a case of like warranty. So are we clear about the constructive of, because obligation can be constructive or legal? So we are clear about that. So legal obligation is when there is a law, like for instance gratuity की obligation under the law company will have to provide. और constructive क्या होती है कि like due to the past practices of the company, the users or the beneficiaries of that benefit, they expect that they will get this, and that fact is known to those benefits. That is a constructive obligation. तो अभी हमें ज़्यादा clear होगा. अच्छा, इसमें a retail store has a policy of refunding purchases. So in this case, should the company make any provision for warranty? Even though it is not required to, no obligation to do, no legal obligation. नहीं है, लेकिन जैसा it is, this policy is its policy of making refunds is generally known. Meaning, if I am a customer, I know that I can go and I can refund it, और ये company की practice भी रही है. So in this case, जो best possible estimate होगा, on those basis, company will make a provision. Warranty claim. On 1st December 2022, the board of an entity has decided to close down a major division and lay off its employees. The cost of redundancy scheme is estimated at ₹50 million. So this is just like a golden handshake. अच्छा, इसमें assumption है कि 31st December is the year end. So there could be 2 different scenarios. पहले तो what do you think? In either case, the company will make a provision. इसमें क्या होना चाहिए? This is a provision, contingency, or what? एक्सपेक्टेड बेस पर जो है वो आप प्रोविजन करना चाहिए. आप फर्स्ट वाला बता रहे थे. फर्स्ट वाले जी अग्री. और दूसरे के अंदर ये है कि चूंकि ये डिटरमाइन हो गया है और अभी फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ, तो आपको 50 मिलियन की जो ये प्रोविजन है, ये इसका मतलब उसको ले लेना चाहिए. यानी अगर आप कह रहे हैं 31 दिसंबर पे अकाउंट जब बनेंगे, 31 दिसंबर पे, तो इन एनी केस ले लेना चाहिए. जी जी. ओके. क्योंकि वो क्लोज भी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि
वो क्लोज जोन सा है ये इसी साल के अंदर कर देगा। जी नहीं, मतलब देखिए इसमें अजम्पशन ये है कि ये तो फैक्ट है। अजम्पशन ये है कि 31 दिसंबर पे अकाउंट्स बन गए। अब वी आर सिटिंग इन जनवरी 2023। अब उस केस में आप कह रहे हैं ये जो अकाउंट्स बनेंगे उसमें आना चाहिए प्रोविजन। अगर ये अज्यूम किया जाए कि ये जो आपका जो क्लोज डाउन मेजर जो डिवीजन जी इसको आप क्लोज डाउन कर, नहीं, वो तो कर दिया ना, वो तो लिखा हुआ है, हैज डिसाइडेड टू क्लोज एंड और आप समझेंगे बोर्ड अप्रूवल भी हो गई है, ले लेंगे। ओके, एनी अदर व्यू जी प्लीज। एक्सीलेंट, या दिस इज द यस एक्सीलेंट, यस बिल्कुल सही है सर। इसमें दो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, फॉर्मल प्लान मैनेजमेंट के पास होना चाहिए और मैनेजमेंट जो है ना फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर दे यस बेनिफिशियरीज को, तो फिर हम उसमें प्रोविजन इसको रिकॉर्ड करते हैं। एक्सीलेंट, दिस इज आपका यू आर 50% करेक्ट कि आपने अज्यूम ये किया कि ये इन्फॉर्म कर दिया गया। अगर लेकिन 31 दिसंबर को ये सब कुछ डिसाइड हो गया है लेकिन मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म नहीं किया गया, दैट मीन्स कि उस केस में फिर आप ये नहीं करेंगे। आपके वाले केस में सिर्फ ये है कि कभी कभी ये होता है कि मैनेजमेंट ऑप्शन देती है एम्प्लॉइज को, वो डिफरेंट है। वो जब फिर एम्प्लॉय जब तक ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर लेगा, दैट इज डिफरेंट। सो इन दिस केस देयर कुड बी टू आंसर्स कि अगर आपने जैसे इन्होंने बताया अभी कि अगर हमें एम्प्लॉइज को बता दिया है तो वी विल मेक अ प्रोविजन, अदरवाइज विल नॉट मेक अ प्रोविजन। ओके, an entity give warranties at the time of sale of repair or replacement of its product within 3 years. So 3 years of warranty. For the last 5 years, the company has received only a few warranty claims. So what should we do? Yes, Mustafa, you are also right. अच्छा, इसमें क्या हमारा what do you think इसमें क्या होना चाहिए? There is a policy of warranty within 3 years. This is policy. For the last 5 years, the company has received only a few warranty claims. इसमें if we go to the first slide, जिसमें था कि present obligation भी है, probable outflow भी आ गया और realizable estimate. So there is no probable outflow क्योंकि the company feels कि last 5 years में estimated कोई claims ही नहीं आया जो IMM material है. So in that case, there is no need for any provision in these financial statements, right? क्योंकि आपको तीनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो एंड रियलाइजेबल एस्टिमेट। तो यहाँ प्रोबेबल आउटफ्लो मीनिंग नहीं है प्रोबेबल आउटफ्लो, तो ये पॉसिबल आउटफ्लो में चला जाएगा। पॉसिबल आउटफ्लो में दिस कंपनी कैन डिस्क्लोज एज अ कंटिजेंसी और कैन गिव अ नोट, बट नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Let's move quickly because revenue again is entirely different. IFRS 50, this I think this is the major difference between the IFRS and IFRS और SMEs के। IFRS 15 ने तो सब कुछ चेंज कर दिया है। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स चैप्टर खत्म हो गया, अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आ गई हैं। However, अंडर IFRS सेक्शन 20 ऑफ IFRS फॉर SMEs ये एग्जैक्टली सेम है जो हमारा IAS 18 होता था। IAS 18 में सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज, डिविडेंड्स। तो ये जो है ये आपके पास फॉरवर्ड हो जाएगी मेल, तो उसमें आप देख भी सकते हैं कि हाउ वी विल क्लासिफाई दीज रेवेन्यू बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। लेकिन जो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये सारे वो हैं जो हमारे पास IAS 18 में आते थे। So there is no, in fact, there is no comparison between section 23 and IFRS 15. तो IFRS 15 तो जैसे मैंने बताया कि completely changed. Yeah, Meher, we will share this presentation with them. Yes, okay. So one more question. Okay. There is a difference between IAS 19 and section 28, where under IAS 9 actuarial gains and losses are recognized in OCI and they cannot be recycled back to penal.
So this is a major change in section 28. These exchange gains or these actual gains and losses can be categorized in P&L or OCI. However, ये आप पार्ट नहीं कर सकते, यानी if you have classified this as OCI, तो उसमें फिर recycling नहीं होगी, एक दफा आपने कर दिया, तो you cannot pick and choose, like half आप P&L में ले जाएं, half OCI में ले, that is not an option. You will have to choose कि P&L में ले जाना है, OCI में ले जाना है. However, in IS 19, so there is no option, वो तो आपको OCI में ही लेके जाना है. इसको जल्दी से क्विकली हम लोग कर लेते हैं ये, बिकॉज लाइक ये है आपका जो हमारा IS 10 है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट और एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट. ये हमें आई थिंक वी ऑल नो व्हाट आर द एडजस्टिंग इवेंट, व्हाट आर द नॉट एडजस्टिंग इवेंट. लेट्स नॉट गो इन द डेफिनेशन. इसको क्विकली बस ये दो तीन हमारे पास वो है कि अच्छा वी इन पाकिस्तान व्हाट डू यू थिंक दैट ऑथराइजेशन डेट क्या होती है हमारी अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है तो हम कहते हैं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथराइज्ड ऑन दिस डेट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग. सो इन एनी केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो AGM में जाती है, हमारे पार्ट पे तो ये मैंने स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड से लिया है. तो इसमें अगर आप देखें, the entity announced profit selected financial instruments, the board of directors approved the financial statement and authorized 15 March 2021. तो irrespective of any other thing, financial statement की authorization date is 15 March हो जाएगी. इसमें सिर्फ लास्ट सेकंड वाला देखें, the management of entity A finalized December this on an issue to its supervisory board. The supervisory board made up solely of non-executive directors review the financials and authorized them for issue on 15 March. So do you think there is any difference? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने वो क्लियर बताया हुआ है कि सुपर नॉन एग्जीक्यूटिव हो या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो, when they have authorized those financial statement, when they have approved those financial statement, meaning वो आपकी वही डेट उसकी ऑथराइजेशन होगी. So उसके बाद जो इवेंट्स होंगे वो we are not obliged to disclose or to take effect in the financial statements. So the important thing is under the law, under Pakistani law, so हमारा पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेट है वो हमारी की डेट. अच्छा, ये भी काफी रेलेवेंट क्वेश्चन था, अब तो वैसे लेट हो गया कि एंटिटी इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल्स फॉर 2019 ड्यू टू कोविड-19 इन मार्च 2020 द कंपनी वाज फोर्स्ड टू शट डाउन वन ऑफ इट्स मेजर मैन्युफैक्चरिंग. अच्छा, अब ये इसको तो एग्जांपल ले सकते हैं, ये दिस इज एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? क्या लगता है आपको? दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज के 2019 पे कोविड आउटब्रेक हुआ दिसंबर, लेकिन जो मार्च में सॉरी ड्यू टू द जब दिसंबर में अकाउंट्स बन रहे थे तो देयर वाज नो इंडिकेशन दैट कि ये कोविड मार्च में कोविड आ गया है. तो इन दैट के दिस इज द कंपनी विल ओनली डिस्क्लोज दिस फैक्ट. दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट. अच्छा, a company has been sued by one of its customer for damages of 10 million during a year this. However, in view of a legal advice, the entity believes that the chances of losing is remote and thus no provision was made in the financial statement. ये आपका जो क्वेश्चन था उस बेस पे प्रोविजन नहीं, कंटिजेंसी डाल दिया. Subsequent to year end, but before the BOD, the court decided the case against entity A. ये this is adjusting और this is adjusting. Why? कि even though कि आपके पास प्रोविजन नहीं रिक्वायर्ड था, लेकिन कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, केस चल रहा था, तो अब सब्सिक्वेंटली पास हो गया तो यू विल हैव टू मेक अ प्रोविजन. अच्छा, ये भी वही 50 million for homeless customer was considered good. Subsequent to that, the customer got bankrupt due to fire accident as the customer will not be able to settle. This is adjusting, non-adjusting? This is non-adjusting because कि आपके पास कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही. जो आपका 50 million था that was considered good as of 31st December 2021, जो भी डेट है, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब ये हुआ है तो दिस इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट. दिस इज आई थिंक क्वाइट सिंपल. ये भी चेंज हो गया. आपको डायरेक्ट डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही है. These two are important actually. Entities prepared its financials on going concern basis. However, subsequent to the year end, management decided to liquidate the operation of the company, and accordingly, the company will not be a going concern. What should we do in this case? This is adjusting.
Yes, this is just because this is part of the going concern assessment of the company. Or going concern में we will have to ensure that company will be viable at least for 1 year. So irrespective of anything, ये आपको going concern assessment करनी है, तो ये adjusting event है. अच्छा, entity has prepared its financials for this date. During the month of December, the management identified a financial fraud committed by an employee related to 2022 operations. The management also concluded the amount is not recoverable. Not recoverable and अच्छा 2020 दिसंबर में मैनेजमेंट को कोई इंडिकेशन नहीं थी, लेकिन बाद में पता चली है, तो इसमें दिस इज एडजस्टिंग और नॉट एडजस्टिंग. So this is a little tricky because specifically इसमें the frauds जो हैं, frauds and errors that are not scoped out, वो in any case those will be considered as adjusting events. यानी आपके पास चाहे वो सिर्फ अगर इमटेरियल है तो निकल जाएंगे आपके, लेकिन आपके पास अगर बीओडी से पहले आ रहे हैं तो इन आइदर केस इफ इट इज एन एरर, इफ इट इज अ फ्रॉड, you will have to adjust those financial statements. So this is I would say an exception to the overall concept. So do you think any of this as a adjusting event or all of these? Sale of a subsidiary, adjusting, non-adjusting, right? Transfer of investment property or asset for sale, these are all subsequently हुए हमारे. ये सब adjusting, non-adjusting, abnormal foreign currency loss due to devaluation, non-adjusting, significant decline in market value of investment in shares, non-adjusting, change in tax rates with significant effect of current and deferred. This is a non-adjusting event. लेकिन जो deferred tax है, क्योंकि deferred tax की accounting इस तरह होती है कि अगर आपका फ्यूचर का टैक्स वो और आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फ्यूचर में टैक्स होने हैं, तो उस केस में आपको deferred tax को एडजस्ट करना पड़ेगा. लेकिन जो टैक्स है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग द अकाउंट्स ऑफ 2022 जून, नॉर्मली क्या होता है कि आपका टैक्स रेट आता है नेक्स्ट ईयर्स के लिए, जो टैक्स रेट आता है, तो वो टैक्स रेट करंट पे तो इफेक्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर आपके पास डेफर्ड में कोई ऐसे एलिमेंट है कि दोज विल बी रिवर्स इन फ्यूचर, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. बैंक्रप्सी ऑफ अ कस्टमर दैट कंफर्म्स अ लॉस एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट, दिस इज एडजस्टिंग. यस. अच्छा, I think I have also prepared some related party, but आपने शायद वो कर लिया है, तो you can ये इसको मैं अभी go through नहीं कर रहा हूँ. इसमें कुछ examples हैं, examples और practical scenario which you can go and see in the slide. So I think you will find some benefit. Let me just check this question. Director approval, okay, सही है. I think Mustafa has been very active. Thanks, Mustafa. So I think that will conclude my presentation. So if you have any final questions, any comments, I'm happy to answer. I'm here. Yes, please. देखें, एडिशनल डिस्क्लोजर इज अलाउड, लेकिन अगर कोई डिफरेंस है दोनों में, अकाउंटिंग डिफरेंस है, तो दैट इज नॉट अलाउड. ट्रीटमेंट का डिफरेंस अलाउड नहीं होगा. नहीं, ट्रीटमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर तो कोई भी, आपने अकाउंट्स बनाए, मिनिमम डिस्क्लोजर दे दिया, इसके बाद जो भी डिस्क्लोजर आप देना चाहें वो दैट इज अलाउड. इन्फॉर्मेटिव डिस्क्लोजर्स अलाउड है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट और अमाउंट्स के अंदर इंपैक्ट आ रहा है तो वो फिर अलाउड वो अलाउड, वो आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते. थैंक यू. जी जी जी. रीस्ट्रक्चरिंग वाला एक सिनेरियो था कि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, रीस्ट्रक्चर कर रहा है, ले ऑफ कर रहा है एम्प्लॉइज को. उसमें तो अगर वो कंडीशंस मीट हो गई तो प्रोविजन है, अगर एम्प्लॉइज को पता चल गया जी, हाँ. तो अगर उनको नहीं पता चला तो हम कुछ भी नहीं करेंगे उसको, या कंटिजेंसी आएगी उसमें? इफ यू वांट यू कैन मेक अ डिस्क्लोजर, क्योंकि देखिए वो फिर कंटिजेंसी की नोट से निकल जाएगा, वो जाएगा सिग्निफिकेंट इवेंट. दिस इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट, तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन नॉट पार्ट ऑफ प्रोविजंस, वो वहां रिक्वायर्ड नहीं है. प्रोविजन और कंटिजेंसी वहां रिक्वायर्ड नहीं है. देखिए आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो ये नहीं बताते आपने डिस्क्लोजर कहां डाल देना है, ये तो कहीं पर नहीं है ना. फॉर एग्जांपल सबसे एक इसका वो होता है कि जो एजिंग ऑफ ट्रेड डेट्स है, मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं कि वो या तो रिलेटेड जो आपका ट्रेड डेट्स के नोट के नीचे आती है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के नोट में चली जाती है. तो इट्स इंटायरली अप टू द मैनेजमेंट के कहां डिस्क्लोज करना है. लेकिन
if the auditor feels ke this is a mandatory disclosure, this is a material disclosure that has to be covered under the financials, वो तो कर सकते हैं हम, लेकिन हमको ये नहीं बता सकते कि आपने डिस्क्लोज कहाँ करना है, डिस्क्लोज कर, और ये मेरा ख्याल है कि अगर दिस इज अ मटेरियल तो फिर तो डिस्क्लोजर बनेगा, अदरवाइज डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। थैंक यू जी सर, अगर जैसे कि अभी सुपर टैक्स का वो आ गया है कॉन्सेप्ट, तो डेफर टैक्स बुक करने के लिए फिर कंपनीज जैसे कि मैनेजमेंट बोलती है कि अगले साल ये हट जाएगा या ये सब हो जाएगा, तो फिर हम डेफर टैक्स किस तरह से बुक करेंगे? डेफर्ड टैक्स 2034 पे ही होगा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कंपनी कह रही है कि एक्स हट जाएगा, जब तक जैसे किसी ने यहाँ कहा भी था, अगर उनके पास हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया या कोई तब तो सही है, अदरवाइज ये वर्बल उस पे नहीं होगा और आपको 34 पे ही 34 या जो भी रेट है उस पे बुक करना पड़ेगा। सर, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज की बात की थी कि कुछ कंपनीज पे IFRS लग रहे हैं और SME, उसमें हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को देख रहे थे, तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं उनका तो काम ही आउटसोर्सिंग का होता है, ठीक है, 500 एम्प्लॉइज एक कंपनी को दिए हुए, 500 दूसरी को दिए हुए, 200 तीसरी को दिए हुए, उस कंपनी खुद के अंदर सिर्फ 10 ही एम्प्लॉइज होंगे मोस्ट प्रोबेबली जो कि सब मैनेज कर रहे होंगे, तो हम उसकी क्लासिफिकेशन के लिए कितने एम्प्लॉइज लेंगे? वो सारे एम्प्लॉइज लेंगे जो इन लोगों ने बाकी कंपनीज को दिए हुए हैं, या सिर्फ जो वो 10 जो मैनेज कर रहे हैं? ओके, नहीं वो बिल्कुल सारे लेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉय की जो हायरिंग है, हायरिंग फायरिंग कहाँ पर हुई हुई है, आउटसोर्सिंग कंपनी में हुई हुई है, उसका सारा पेरोल वहां हुआ है। ये तो बिजनेस मॉडल कंपनी का ऐसा है कि उसने दैट कंपनी हैज आउटसोर्स दोस एम्प्लॉइज, अगर वो एम्प्लॉय किसी पे केस करना चाहे इसका आउटसोर्सिंग कंपनी में करेगा, तो आउटसोर्सिंग कंपनी का तो इस एब्सोल्युटली क्लियर कि वहां तो आपको पूरे दिखाने हैं। वो जब आई थिंक इनसे जब डिस्कस हो रहा था कि ये डिबेटेबल है और ग्रे एरिया है कि जहां गए हैं वो उसको कैसे शो करेंगे, वो दैट इज अ ग्रे एरिया, लेकिन दिस इज लाइक देयर इज नो एम्बिग्यूटी। थैंक यू जी। सर, ये 30 जून को जैसे आपके स्टॉक हैं वो अपना जुलाई या अगस्त के अंदर जाके आग लग जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है उसका भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो 30 जून को जो एसेट स्टॉक दिखा रहे थे वो एसेट जो है जब एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ रिपोर्ट जो है उनकी वो हैसियत नहीं रही, और ये जो अपना फाइनेंशियल देखने वाले हैं ताकि ये एटलीस्ट को उनकी नॉलेज में हो, तो एक बात तो ये। दूसरा ये अभी इस वक्त के अंदर जैसे पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से आप देखें कि जो वैल्यूज हैं खासतौर पे जिसके पास फॉरेन करेंसी के डिपॉजिट रखे हुए हैं, तो अल्टीमेट जो उसका बिल्कुल की वैल्यू कम होगी। तो अल्टीमेट अगर फर्स्ट के मैं एक बात कहता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज के जो डिपॉजिट्स हैं, अब वो ज़ाहिर है वो आगे फ्यूचर में कब तक जो आगे जाके गेन करेंगे या नहीं करेंगे, तो क्या हमें इसकी डिस्क्लोजर या इसके इम्पैक्ट नहीं लेने चाहिए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो जब क्लोज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या नहीं आएगा? ओके, उसके अंदर क्या? ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, वो तो स्टॉक वाला जो है ना वो आपका एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन से निकल जाएगा, लेकिन जब आप उसकी अपनी कॉस्टिंग करेंगे, जब आपकी एक कॉस्टिंग होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो जब आप उसको एनआरवी पे करेंगे तो उस आई थिंक उसके अंदर उसकी एडजस्टमेंट आ सकती है। लेकिन ये देखिए 30 जून पे एक आपने स्टॉक किया, आपके पास कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि ऑब्सोलीट हो गई इन्वेंटरी, नहीं है, ये है एक इवेंट हुआ बाद में जाके, तो ये तो क्लियर हो गया कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है आप, लेकिन उसको फिर वही जैसे मैंने कहा ना कि आप जब उसकी वैल्यूएशन कर रहे होंगे उसमें एनआरवी के अंदर तो ले सकते हैं उसको, लेकिन इसको थ्रू एडजस्टिंग इवेंट नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि आपके पास इवेंट है ही नहीं ना। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक बैंकरप्ट, तो आपका जो एक गुड है, आपको जो आपका जो एक रिसीवेबल है, गुड है, आपको पता है चाहे एक दिन बाद भी वो बैंकरप्ट हो गया, लेकिन आपको अलाउ कर रहा है स्टैंडर्ड कि वो आप, क्योंकि आपको 31 दिसंबर को नहीं पता था या 30 जून को नहीं पता था, तो आप उसको नहीं ले सकते। लेकिन अगर इसमें ये नहीं है कि आपको नहीं ले सकते, ये फॉर एग्जांपल वो अगेन जैसे मैंने कहा कि कंजर्वेटिव अकाउंटिंग तो अलाउड है, अगर इसमें कंपनी एक्सपेक्ट ये करती है कि मुझे नहीं मिलने वाला, आप उसको ये एक रिसीवेबल है। अच्छा, ये जो एक्चुअली जो हमारा
जो जब ECL मॉडल लगे जब आया ना, जब से उसने तो उसको वैसे ही मिटिगेट कर दिया है। मैं रिसीवेबल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस इन केसेस में जब आप ECL की वर्किंग करेंगे ना, तो वो पूरा का पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन इन्वेंट्री में क्योंकि ECL मॉडल नहीं है, उस केस में आप वो तो फिर NRV टेस्टिंग पे जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी कंपनी को ये नहीं कह सकते कि उसको एब्सोल्यूट दिखा रही है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो नहीं दिखा रही तो आप यू कैन नॉट फोर्स दैट कंपनी कि आप इसको रिवर्स इसको लॉस बुक करें, ये नहीं कर सकते। तो वो मैं 30 जून को नहीं कर रहा, वो 30 सितंबर को या आगे की डेट के अंदर कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे पता है, मेरे नॉलेज के अंदर एक बात आ गई है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जो एसेट जिनसे है वो फेयर वैल्यू पे आ रहा है। वो जाहिर है जिनसे किस्म का अगर मैनेजमेंट जिनसे किस्म का उसको एग्री नहीं करती, तो अल्टीमेट मुझे क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी अगर वो अमाउंट स्टॉक का मटेरियल। क्योंकि वजह ये है कि फिर मैं अगर कह रहा हूँ कि जी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो एसेट्स हैं फेयर वैल्यू पे, तो फेयर वैल्यू पे जो अब तक के जो डेट ऑफ रिपोर्ट है उस वक्त के अंदर वो फेयर वैल्यू पे नहीं। सही। तो मतलब मैं असल में उस मैं बता रहा हूँ, आपकी जो रिपोर्ट है वो 30 जून पे, ठीक है, 30 जून पे रिपोर्ट है। आपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ये चेक करना है कि क्या स्टैंडर्ड आपको अलाउ कर रहा है कि इसको आप 30 जून पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, या करना है या नहीं करना। आपको स्टैंडर्ड देखने हैं। स्टैंडर्ड्स में स्पेसिफिकली गिवन है कि ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। ये जब एडजस्टिंग इवेंट नहीं है तो फिर आपको इसको कुछ, लेकिन वही मैं वो कह रहा हूँ कि अगर आप ओवर एंड अबव कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, आप उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है ही नहीं। इसको आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने क्वालिफाई नहीं किया। जी जा रहा है जी, वो ये शो कर रहा है कि नहीं, आप 30 जून पे रिपोर्ट कर रहे हैं। आप 30 जून पे आप सब्सिक्वेंट इवेंट सिर्फ वो लेंगे जो स्टैंडर्ड आपको कहता है। अगर फॉर एग्जांपल ये इंडिकेशन होती, लेट से ये आप इसको ये ले लें, ये इंडिकेशन होती ये स्टॉक वैसे ही इम्पेयर्ड हो गया, इम्पेयर्ड है ये किसी और भी रीजन, और फिर उसमें आग लग जाती ना, तो फिर तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाइड है। लेकिन अदरवाइज आपको बीइंग ऑडिटर आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसमें ये कर सकता हूँ क्या, यानी मैं उनसे कहूँ कि सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर जहाँ स्टॉक की जो सही किस्म का डिस्क्लोजर दिया हुआ है वहां पर एक पैराग्राफ ऐड कर हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर वो नहीं डालना चाहेगा तो आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये डिस्क्लोजर दे सकते हैं आप बिल्कुल कि सब्सिक्वेंटली इतना हो गया, ये कर सकते हैं सब्सिक्वेंटली आप। बल्कि आई थिंक ये डिस्क्लोजर आना चाहिए। अगर मटेरियल अमाउंट है तो डिस्क्लोजर बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इट्स अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट बट इट वारंट्स अ सेपरेट डिस्क्लोजर। अगर आप डिस्क्लोजर डाल देते हैं वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली कंपनीज रिलेक्टेंट होती हैं। ये एम्फेसिस वगैरह का भी ऑप्शन हो सकता है अपनी रिपोर्ट के अंदर, एम्फेसिस पैराग्राफ का जो एक है। हाँ, वो देखिए एम्फेसिस तो फिर ऑडिटर की जजमेंट है कि वो कहता है अगर यूजर के लिए ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है फिर डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं जी। होना चाहिए और इतना पेडिव कैपिटल और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इतने थे, तो मैं ये पूछ रही हूँ तीनों कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए और का ऑप्शन है कि और एनी वन कंडीशन, ठीक है, क्योंकि अगर किसी का पेड अप कैपिटल 800 है और वो 100 मिलियन वाले, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा हो गए तो फिर वो लार्ज सही हो जाएगी। एनी वन कंडीशन। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से, देयर इज नो क्वेश्चन यहाँ पर। Company issued cumulative for non-party agreement company and carrying fixed asset preference dividend. The company should also have a firm option for each company. Whether these instruments are compound, I think ये कुछ थोड़ा सा हमारे उससे हट रहा है, इसको अभी रहने देते हैं। Not relevant to current presentation but relates to tax. During the 5 years, the company paying minimum tax. This year, company was in profit and subject to ACT as minimum tax. Current year, whether deferred tax will be recorded. अच्छा, ये इन्होंने एक आई थिंक ये ACT एक क्वेश्चन ये पूछा है कि मिनिमम टैक्स पे है, कंपनी इज पेइंग मिनिमम टैक्स दिस ईयर, कंपनी वाज इन प्रॉफिट एंड सब्जेक्ट टू ACT एज मिनिमम टैक्स इन करंट ईयर, वेदर डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कि इसकी आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लग नहीं रही है इरफान, आई थिंक। लेकिन अगर मिनिमम टैक्स है और आपका ये यू कैन इंश्योर कि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स तक मिनिमम ही रहेगा, तो फिर तो डेफर्ड टैक्स बुक होना चाहिए। लेकिन आई डोंट वांट टू कमेंट बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे क्लियर नहीं लगा।
और ये यूसुफ का भी आई थिंक जो क्वेश्चन क्यूमुलेटिव वाला है वो मैं सब समझ नहीं सका, तो आई वुड रिक्वेस्ट के या तो इसको पर्सनली ईमेल करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा तो वी कैन डिस्कस। तो आई थिंक अदरवाइज मेहर, आई थिंक my presentation is done. Yeah. Okay, thank you very much everyone.